म्यूट हो गए थे, सॉरी। वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्रिकेट थर्ड मैन क्रिकेट शो। बहुत 5-10 मिनट जल्दी आ 5 मिनट जल्दी आ गए। और कुछ तो रीज़न है जल्दी आने का, दैट इज़ टाइटल में घुसा हुआ रीज़न। द थिंग इज कि इंडिया ने आज एक मैच जीता है बांग्लादेश के सामने, आफ्टर बीइंग 74 फॉर 7। डिड इंडिया डिजर्व टू विन दिस गेम? पता नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जिस तरीके से खेले आज यहाँ मैं तो कहूँगा काफ़ी काफ़ी रीसेंट जो परफॉर्मेंस रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी एज एज एन इंडियन टेस्ट टीम फैन। अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई रवि शास्त्री बेटर थे। वो नहीं हो वो जो जब थे ड्रेसिंग रूम में, तब लग रहा था कि कुछ तो अलग माहौल है। आई थिंक द्रविड़ के अंदर लग नहीं रहा वैसा, ऐसा वो प्रॉब्लम लग रही है मेरे को राइट नाउ। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई मीन द माइंडसेट राइट नाउ इन द इंडियन क्रिकेट टीम, स्पेशली इन द टेस्ट फॉर्मेट, व्हाट डू यू थिंक इट इज? क्योंकि कल रात को जयदेव उनडकट और अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे थे इंडिया के लिए, विद श्रेयस अय्यर लेफ्ट, ऋषभ पंत लेफ्ट, रवि अश्विन लेफ्ट। ठीक है। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट 10-12 ओवर बचे थे, जब पता नहीं कितने ओवर बचे थे जब अक्षर पटेल बैटिंग करने आए थे। लेफ्ट हैंडर ही भेजना था, तो वो टाइम पे ऋषभ पंत भी वो काम कर सकता था। कि अगर रवि शास्त्री होते एज अ कोच वो टाइम पे इंडिया के, मेरे को तो लग रहा है कि वो भेज देते ऋषभ पंत को कि भाई तू जा, मार। बिकॉज दीज कंडीशंस आर नॉट डिफरेंट फॉर द इंडियन टीम। वी प्लेइंग इन बांग्लादेश। मैं तो कहूँगा इंडियन होम कंडीशन ही है देखा जाए तो। ऑल्सो हाँ, जो जे ने जो कमेंट किया है कुलदीप यादव को बेंच करना, पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ ये सब, बट व्हाट आई एक्सपेक्टेड ऑफ राहुल द्रविड़ एज अ कोच, वो मेरे को दिखा नहीं है सैडली। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस इन द चैट, बट लेट मी नो योर ओपिनियन यार, क्योंकि थोड़ा गुस्से टाइप वो हुआ है। आज लग रहा है क्योंकि ये मैच इतने, टू बी ऑनेस्ट मेरी तरफ से हमें तो जीतना नहीं चाहिए था। It's literally the mindset is so bad right now, the mentality is so bad right now in the team, कि अब लग रहा है कि भाई क्या ही बढ़िया काम किया था रवि शास्त्री ने विद टीम इंडिया। अगर कुछ है पेटिशन वेटिशन तो दोबारा दोबारा ले आते रवि शास्त्री को। But right now, what to be honest, what I expected, I am not seeing that in this team. Not because it's just Rahul Dravid. I expected a different thing when Rahul Dravid came into this team. So I think what do you guys think in the chat? Yeah, let me know through comments later, and then yes, we'll discuss about the IPL. But this test match has been disappointed in my opinion, disappointment. But let's see. Saurabh is saying, hi Saurabh, the dressing room is the worst in a long time. Yeah, I kind of think so. Uh, Atharva is saying aggression is missing in this team. Yeah, I agree. I wouldn't say aggression is missing. I would say the fight is missing when I see them on the field. क्योंकि uh, आई थिंक जब रवि शास्त्री विराट कोहली, जब वो जो उनका जो पैर था, वो टाइम पे भले इंडिया खराब करे, एक अलग टीम फील्ड पे दिखती थी या एक अलग एनवायरनमेंट दिखता था ऑन ऑन स्क्रीन, क्योंकि हम तो ग्राउंड पे जाके देख नहीं सकते। ऑन स्क्रीन में एज अ फैन बता रहा हूँ, इन माय ओपिनियन, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, डू यू एग्री विद मी और नॉट, बट दैट इज व्हाट आई फील। सो लेट्स सी मैन, आई मीन ऐसे आई डोंट सी अस विनिंग द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया आ गई सामने इन द फाइनल, और से साउथ अफ्रीका आ गई या इंडिया नहीं भी पहुंची, तो देन डोंट बी सरप्राइज्ड. Sorry saying we sent two night watchmen. It's totally pathetic and speaks volumes about the negative mindset. Completely agree there as well. Benching Kuldeep after a long time, after a match of the performance was a bit bizarre. It wasn't bizarre, I would say. Yes, I think so. Why they benched him, but it isn't justified to be honest. ऐसा नहीं है कि green top pitches पे you can't take a spinner. अश्विन भी घुमा रहे थे ना बॉल, एंड में देखा ना कितनी बॉल घूमी है पिच पे. So I think yes, I agree, Jay. She shouldn't have been benched. Uh, Jay is saying Virat's form is not a very, या जो ये शायद अगर पोल डाली है हम में से किसी इसने टीम में से हमारी, Virat's form is not a worry. He'll gain it soon as he did in the T20 ODI. यार Jay, the thing is थोड़े ना stats पढ़ रहा था मैं इसके पहले कि in the this year I think Virat Kohli and Ravi Ashwin, they have played the same number of test matches.
Guess who has more runs this year out of the two? So चेक आप गेस कर सकते हो कि कितना कितना खराब फॉर्म रहा है राइट नाउ विराट कोहली। ही इज एवरेजिंग लेस देन 30 फॉर द पास्ट 2 और 3 years। ये साल कुछ तो 6 टेस्ट मैच खेले, 6 या 7, उसमें ही इज एवरेजिंग लेस देन 30। पिछले साल ही प्लेड आई थिंक 9 और 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें भी एवरेज लेस देन 30। This year in 2022, he isn't in the top 50 run getters if I'm not wrong in test matches। ये शायद मेरे को स्टैट मिला था। दे रवि अश्विन जडेजा जो 3 टेस्ट मैच खेले हैं इस साल, he has scored more runs than Virat Kohli। Ravi Ashwin has scored more runs than Virat Kohli in test matches this year। So I'm not saying कि Virat form is a worry, but that is one of the reasons Indian team is struggling right now because we rely so much on Virat Kohli। अपन ने रहाणे को ड्रॉप किया है। वेरी सून आई थिंक केएल राहुल विल बी ड्रॉप्ड एज वेल अगर ऐसा परफॉर्मेंस चलता रहा तो। आई थिंक right now a lot of things need to be answered for starting from the mentality, the environment, everything, because अगर 74 for 7 पे दैट वाज ऑस्ट्रेलिया इन फ्रंट, नॉट बांग्लादेश। बांग्लादेश आई थिंक वो 2 4 चौके पड़ने के बाद थोड़ा प्रेशर ले गई अपने ऊपर। दैट इज द रीजन अश्विन एंड श्रेयस अय्यर डिड रियली वेल। बट अगर वहां पे साउथ अफ्रीका होती, वहां पे ऑस्ट्रेलिया होती एंड दे वर डिफेंडिंग 145 एंड इंडिया इज 74 for 7, आई थिंक वी आर लूजिंग द गेम। और मोमिनुल हक ने, लेट्स नॉट फॉरगेट, रवि अश्विन का कैच ड्रॉप किया था व्हेन ही वाज रियली इन। तो वो टाइम पे वी वर लिटरली आउट ऑफ द गेम। सो maybe it is about some players have not taken the exit of the previous management really well, क्योंकि अब तो लग रहा है कि भाई hats off to what रवि शास्त्री did in the dressing room with this team। क्योंकि वो फील्ड पे ही दिखता था, ऑन द स्क्रीन इट वाज वेरी विजिबल कि क्या चल रहा है। द प्लेयर्स आर अप फॉर अ फाइट, कुछ भी स्कोर होगा हम चले जाएंगे डिफेंड करने। 74 for 7 अगर वो टाइम पे भी होता ना कहीं से, लाइक इंग्लैंड, कहीं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तभी भी लगता कि यार हमारे जो लोअर ऑर्डर वाले आके वो मारेंगे। एंड प्रीटी श्योर कि वो टाइम पे रवि अश्विन और से अक्षर पटेल या जयदेव उनाडकर जैसे नाइट वॉचमैन तो ऊपर नहीं आते वो टाइम पे। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द टेस्ट टीम। Saurav is saying Ashwin plays spin better the most than our experienced full-time test batter, hands down। Yes, completely agree as well। KL Rahul said, we've always believed someone to put the hands up when needed। KL Rahul के हाथ का है। Yeah, man, I mean, I think right now, to be honest, it's not just about a KL Rahul or about just Virat Kohli. It's about the entire team। क्योंकि yes, the World Test Championship का cycle है, it is about to end, but let's not forget this will go on after that as well। So if possible just change it, क्योंकि right now it is looking very difficult for this Indian test team। क्योंकि और टीम कोई होती तो भैया हमारे लग जाने वाले थे। मैं बीच का वर्ड नहीं यूज करना चाहता, बट आई थिंक लग जाने थे। बट positives as well, a lot of positives। Can we see Shreyas Iyer as test captain? I can see him as a part of the leadership group, very sure। क्योंकि I think he looks probably the most confident test match batter right now। क्योंकि जब श्रेयस अय्यर बैटिंग करने आया था, इंडिया was struggling for sure at that time as well। And इसका माइंडसेट ऐसा लग रहा था कि यार मेहदी हसन ही तो है, क्या ही फर्क पड़ता है। कोई नेथन लायन नहीं है जिसको मैं मार दूंगा, कोई केशव महाराज नहीं है जो लगातार विकेट ले रहा है। मेहदी हसन तो है, इसको तो मैं मार लूंगा। दैट इज व्हाट श्रेयस अय्यर showed today। So I think that is the mindset which I expect from a lot of guys in this team, and not just a player who is batting at number 7 now for some reason for Team India। First of all, वहां पे बैटिंग करने आना ही नहीं चाहिए था। मैं तो बहुत disappointed था, to be honest, this with this performance, with the decisions on the field, very disappointed। Aditya is saying Virat is averaging 26 for the last 3 years and still some people are saying his form is not a worry। Rahane has been dropped on the basis of same form। Yeah, I think ये मैंने एक साल के देखे थे स्टैट्स, मैंने 3 साल के नहीं देखे थे, क्योंकि आई थिंक वो जो कोविड वाला ईयर था 2020 में, उसमें 2 या 3 टेस्ट मैच खेले थे बस विराट कोहली ने, तो वो मैं पास आउट करा था। बट लास्ट 2 years आई थिंक 16 और 17 टेस्ट मैचेस द एवरेज इज लेस देन 30। सो same reason we drop Rahane as well। Hopefully this goes really well moving forward। Rohit Sharma, what about Rohit Sharma? I don't know, you're asking from the Mumbai Indians point of view or from the Indian point of view? Australia versus India will be closest in a long time, can't wait। But to be honest, uh, Australia is looking the better side right now। Yeah,
You almost lost the match before the second test. It was first test, second innings when complacency kicked in. It didn't bowl. Kuldeep gave chance to other and made man of belief. Yeah, completely agree there as well. So Parav is saying Virat Rahul are now defensive. Their reflexes are slow. They are dropping catches. Now young ones should be back. Possible, yeah. And I think a lot needs to change. For some reason, I think the confidence factor is a bit different than the previous management. I don't know you guys will agree with me or not, but आई लाइक वॉचिंग इन शॉर्ट. अगर मैं जो पूरा जो सेगमेंट 10-12 मिनट की जो बात करी है, अगर मैं सम अप करूं, आई लाइक द प्रीवियस 2 साल वाला जो क्रिकेट खेली थी ना बिफोर राहुल द्रविड, मोर देन व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ. दैट्स इट. यार सुधीर, रौनक नाम है, ये नाम नहीं है उसका. सॉरी. अगर थोड़ा चैट में थोड़ी रिस्पेक्टिबिलिटी बढ़ा के रखोगे तो दैट इज मच बेटर. ओके देन मूविंग ऑन. लेट्स सी यार, आई मीन आईपीएल की बात कर लेते हैं. अभी आधे सारा लोग तो इसके लिए ही आए हैं यहाँ पे. ऑल्दो आई वांटेड टू टॉक अबाउट द टेस्ट मैच व्हिच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इंडिया टू विन, टू बी रियली ऑनेस्ट, बट लेट्स सी क्या होता है. ठीक है, चलो यार, आईपीएल की प्रोबेबल 11 वाली बात करते हैं अभी. एक एक करके सब टीम्स पे आते हैं. कौन सी टीम से पहले स्टार्ट करें, बता दो. क्योंकि ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए नहीं, क्योंकि आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द वे वी प्लेड यार, और कुछ रीज़न नहीं था मेरा. बट या आई थिंक आईपीएल के बारे में ही लोगों को बात करनी है. सो लेट्स सी. थोड़ा मैं कुछ वो रेडी कर रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा वो कर देना, टाइम दे दो थोड़ा. या ओके, वी आर रेडी with the things. Let's go ahead with the presenting of the first team. कौन सी चाहिए? uh, हाँ, so this is much better. Ronak is not available right now. He has some work. Yeah, cool. So let's see the first team. MI की बात कर रहे हैं. मैंने चैट में 2-3 लोगों से कह दिया. ठीक है अभिषेक, let's play MI का first 11. What do you guys think of this 11 which we have made? I think you can tell me your suggestion. This is what we thought as क्या हो सकते हैं 11 for Mumbai Indians this IPL, in the coming IPL, sorry. रोहित शर्मा एंड कैमरन ग्रीन टू ओपन. डोंट बी सरप्राइज अगर रोहित शर्मा 3 नंबर पे खेलने आ जाए. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ईशान किशन एट नंबर 3 इज व्हाट आई फील. सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, शम्स मुलानी, जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, जेसन बेरेंडॉफ एंड कुमार कार्तिकेय. uh, a lot of people, a lot of fans, Mumbai Indians fans on Twitter, they want Devol Bravis to be a part of this 11. For some reason, I don't know where he fits it in the 11. Because Cameron Green will play, Jofra Archer will play if he's fit, Tim David will play. Now, when Mumbai has done really well, they have gone in with 3 fast bowlers, proper fast bowlers. And कौन सा सीजन था 2020 में? there was Trent Bolt, there was जसप्रीत बुमराह, and there was one more fast bowler जिसका नाम मैं नहीं याद कर पा रहा. Who was the fast bowler यार? चैट में कोई बता दो. There was right arm fast bowler from Australia. कोई तो था ना एक जेम्स समथिंग कुछ तो था उसका नाम. अगर किसी को याद हो तो चैट में बता दो. These 3 were the main fast bowlers for Mumbai Indians at that time. And Hardik Pandya was the 4th one, जो यहाँ पे I think Cameron Green काम करेंगे वैसे. So I don't know who was that. I can't remember his name, क्योंकि काफी फास्ट बॉलिंग कर रहा था वो टाइम पे वो. I think yeah, this guy James Pattinson from Australia. I think yeah, this guy was supporting Trent Bolt and Jasprit Bumrah, and Mumbai won the title that season. So I think wo approach Mumbai can adopt once again, because if they do, I don't see Devol Bravis playing in the 11. Although I am a huge fan of Devol Bravis because I'm a Mumbai fan, so I think makes sense. Also, उसके अलावा I think it is very important कि डेवल ब्रेविस बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी देखना है, बिकॉज कैमरन ग्रीन इज प्लेइंग. दैट इज अ गिवन, क्योंकि आपने 17-17.5 करोड़ रुपए दिए, तो कैमरन ग्रीन विल प्ले. Don't know about Deval Bravis or Tristan Stubbs. I think it's a shout out between Tristan Stubbs and Tim David in the middle. But Tim David, I think he's doing really well right now in the BBL as well with the Hobart Hurricanes. So I think very recently Tim David played a decent knock, जहाँ पे I think his team was struggling and he helped the team to a good score. I think 160, 170 कुछ तो क्रॉस करवा दिए थे वो टाइम पे. So I think this is what we feel कि 11 होगी. We are not saying कि यही 11 होगी. So don't
गरम मत हो जाना कि यार ये थोड़ी टीम होती है ऐसे ब्ला ब्ला, ये नहीं। शम्स मुलानी आई थिंक ही विल प्ले फॉर एट नंबर 7 और ऋतिक शौकीन, दोनों में से एक, बट ही गिव्स यू दैट लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन जो कृणाल पांड्या देते थे बॉम्बे को, सो दैट इज द रीजन वी हैव एडेड हिम. So there are like 6 bowlers in this team, and Tilak Verma can bowl part time as well. So in short, 6 bowlers, 20 overs with 2 spinners. I think this is what we feel will be Mumbai's approach, with Jason Behrendorff being the third seamer, or could be Jaya Richardson. दोनों में से कोई एक हो सकते हैं. So this team looks really good for me. Yeah, spin. I think Raven, I agree. Spin bowling is a concern for Mumbai, but I think that has always been a concern because Krunal Pandya wasn't a proper spinner as well. The last proper spinner to play for Mumbai Indians, I would say, was Harbhajan Singh, and उसके अलावा भी the Mumbai team hasn't relied much on spin bowling, is what I feel. So that is the reason I think they still back that philosophy. Uh, Jay is asking Arjun Tendulkar to get 1 or 2 games. यार only if मुंबई का सेम सीजन निकल जाता है पिछले साल जैसा, आई थिंक देन इट इज पॉसिबल दिस टाइम अराउंड, बिकॉज इज डन रियली वेल. मतलब अभी सेंचुरी पड़ गई है, बट बॉलिंग नहीं करी वो, पता नहीं उसमें बॉलिंग वाले में नाम नहीं था अर्जुन तेंदुलकर का वो स्कोर कार्ड में, तो आई डोंट नो बॉलिंग करी कि नहीं करी. But yeah, I think अगर मुंबई स्ट्रगल करेगी then Arjun Tendulkar can get a game. Aditya is asking Duan Johnson to start ahead of Jason Behrendorff, can swing the new ball, good hitter at number 7. Yeah, not a bad shout here. I agree. I think he is literally Marco Jansen. Just 2 साल पीछे है मार्को यानसन के. मार्को यानसन 2 years back was डुआन यानसन is what मेरा वही है उसका डिस्क्रिप्शन. विप्लो आस्किंग केकेआर की बात करेंगे एक एक करके. अभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मुंबई, एक एक करके इन सारी टीम्स कवर कर लेंगे. या सो Supriya saying Nathan Coulter Nile. नहीं, I think that was James Pattinson. Sorry, Coulter Nile नहीं था वो. Jai Richardson has the opportunity to play. I think he's a good buy for Mumbai as well. But all these guys need to they stay fit मेरे हिसाब से. Piyush Chawla should play in the 11. I don't agree with this in place of Kumar Karthikeya. No, I think Mumbai will back Kumar Karthikeya for the whole season as the lead spinner, and I don't blame them because he did really well when he came in last year. लास्ट ईयर तो आई थिंक पूरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी यार. उसके अलावा तो मुंबई जो भी करे लास्ट ईयर ऐसे अच्छा ही लग रहा था. आई थिंक देयर इज वन मोर प्लेयर जिसने मिडल ओवर में आके विकेट लिए थे मुंबई के लिए लास्ट सीजन. आई थिंक रमनदीप सिंह इज वन प्लेयर जो कि मुंबई ट्राई कर सकती है, एंड मैं उसी पे आ रहा था परव, जो इम्पैक्ट प्लेयर है. आई थिंक रमनदीप सिंह इज दैट गाय फॉर मुंबई इंडियंस. ही कैन बैट, ही कैन बोल in the middle order. He can give you that big hits as well. So I think that is one area which Mumbai has noticed कि हाँ एक अच्छा एक impact player लगेगा. Because all the teams they will struggle with that impact player wala thing. I think Mumbai has a decent impact player. I think Ramandeep player is the only impact player I can see in this team right now. Vishnu we know, yes, but depends कि batting कर रहे हैं पहले कि bowling कर रहे हैं, उस पर भी depend करता है. So yeah, I think that is pretty much it for Mumbai. I don't know और कुछ बात करनी है आपको मुंबई इंडियंस के बारे में तो बता दो चैट में, अदरवाइज आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम. गो अहेड गाइस, कौन सी टीम के बारे में बात करें? बताओ फटाफट बताओ. तब तक मैं और थोड़े मुंबई के कमेंट्स लेता हूँ. मुंबई इंडियंस विल रेस्ट 1 or 2 प्लेयर्स बिफोर आईपीएल मैच, सम मैच विल गिव चांस फॉर ब्रेवेस्ट. आई डोंट नो यार, ये रेस्ट वाला सिस्टम अभी मैं थोड़ा उसके अगेंस्ट हूँ. अभी आप लोग साइन करते हो करोड़ों वाले कॉन्ट्रैक्ट और आप I mean, then you ask for rest or you rest players for some reason. I don't agree with that. Jay saying, do you see Jofra fit for 14 games? Hopefully, काफी पता चल जाएगा अभी. I think there is कौन सी टीम है, कौन सा अभी वो सीरीज है जिसमें साउथ अफ्रीका की वाली सीरीज है जिसमें वो किया है जोफ्रा आर्चर का नाम आया है. तो आई थिंक उसी में पता चल जाएगा व्हाट इज द पेस फॉर जोफ्रा आर्चर दिस कमिंग अप. जो इंजरी से वापस आए हैं, क्या पेस के साथ आ रहे हैं, देखना पड़ेगा. एक सेकंड है गाइस, मैं थोड़ा एक वो कोई तो ज्वाइन करने वाला है तो उसको एक लिंक भेज दूं. या नेक्स्ट टीम आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट कमेंट मैंने देखा था केकेआर बाय रौनक. सो ओके, केकेआर के ऊपर बढ़ते हैं अपन. केकेआर वेयर इज केकेआर यू केकेआर. हाँ, तो ये तो हमने लगाई है यार 11, क्योंकि इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि रहमानुल्लाह गुरबाज शायद ओपन ना करें. इट इज पॉसिबल मेरे हिसाब से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सरप्राइज कि इनके पैसे कैसे बच गए.
क्योंकि उनके पास पहले इतने कम पैसे बचे हुए थे एंड उसके बाद भी उनने बहुत ज़्यादा पैसे बचा लिए कंपेयर टू अदर्स, सो दैट इज़ वन शॉकिंग, बट I don't see this team doing well this season for some reason. आई डोंट नो कितने लोग एग्री करेंगे मेरे साथ चैट में। अगर मेरे को टॉप बॉटम 3 वाली अगर कुछ प्रेडिक्शन करनी हो, आई थिंक केकेआर इज़ माय टीम इन वन ऑफ देम। बट लेट्स सी, एनीथिंग कैन हैपन यार, इट्स अ वियर्ड सीजन अगेन, कोविड वाला सीजन हो सकता है, ऐसा लग रहा है। होपफुली ना हो। बट या, दिस इज़ व्हाट वी फील कुड बी द 11। रसल विल प्ले, नरीन विल प्ले एंड लॉकी फर्ग्यूसन विल प्ले। चौथा कौन होगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। विल इट बी शकीब अल हसन and N Jagdishan to open, or will it be Liton Das in the middle order? So ये देखना पड़ेगा कि KKR कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करती है। uh, थोड़े कमेंट्स अगर आए केकेआर के, या he's saying opening is still not settled in KKR. हाँ यार, आई थिंक एन जगदीशन फॉर 90 lakhs is not a bad pick मेरे हिसाब से। He can give you 14 games, but yeah, like you mentioned, it's not proper experience मेरे हिसाब से तो। And Ramanullah Gurbaz, with the form he's in right now in different T20 competitions, I think that's not a bad shout to open, and 50 lakhs में मिल गया था आपको, तो I think he deserves a chance at the top of the order. He's an explosive batsman, and on a pitch like Eden Gardens जहाँ पे ball bat पे अच्छे से आती है, I think he'll be very very useful. बट या, दिस इज व्हाट वी फील इज द 11। किसने तो यहाँ पे कहा था कुछ, तो एक कमेंट आया था, मेरे को याद नहीं। या स्पैम मत करो गाइस कमेंट, इसलिए मेरे को कमेंट ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जय सिंह, दे नीड टू मूव ऑन फ्रॉम रसल, या आई कंप्लीटली एग्री। आई थिंक दिस इज द लास्ट सीजन फॉर आंद्रे रसल एंड एज वेल एज सुनील नारायण, आई वुड से। if KKR has to challenge for a title, this team is not challenging for a title is what I feel. But yeah, I completely agree, because I think कितने करोड़ दिए रसल को, 14 या 12 करोड़, आई थिंक रसल, same amount for Sunil Narine as well. So I think KKR need to move on from these guys, क्योंकि for sure you are getting better players than these at the same amount. Biplo is saying Gurbaz and Jagdishan, yeah, Venki is recovering from injury, can open. Yeah, only because I think that was a left hand right hand combination, and Venkatesh Iyer ऊपर ही बैटिंग करे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज मिडल ओवर्स में ही इज ऑफ नो यूज इन माय ओपिनियन। Aditya saying KKR to finish in the bottom three. All their bowlers are run machine except Nareen. Yeah, it won't be surprised यार. I mean, that is my prediction as well. मैं तो पहले bottom two बोलने वाला था, but I think थोड़ा ज्यादा ऊपर फिनिश कर सकते हैं एक दो टीम्स के ऊपर से। So I think yeah, और कुछ कमेंट है अगर KKR का तो Russell, yeah, Ronak is saying Russell not last season. They will release Varun. You never know, man. Russell will turn 35 this IPL itself, so I think you need to have a look at that as well. Ronnie Singh, David Visa is a great backup for Russell. Yeah, he's a good backup, David Visa, but also I don't see him as a long-term guy. Because if anyone saw the post-auction interviews या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी बोलते हैं, उसमें आई थिंक आकाश अंबानी while picking up Cameron Green mentioned that the age factor for Cameron Green is very important for them to spend that money. Andre Russell right now is 33, 34. He's getting 16 CR. Cameron Green right now is 23 and he's getting some 17.5 CR. So it's a future investment for sure, and it's not a bad investment, is what I feel. That is what KKR need to do moving forward as well. They've got a great captain in Shreyas Iyer. They need to make the most out of it, क्योंकि अय्यर का आप यूज तभी कर पाओगे ढंग से जब you have a decent team around him. अगर अय्यर के अराउंड एक decent team है, like Delhi had with Ravada and Norkia as bowlers, Rishabh Pant in the side, so they did really really well. So that is what KKR needs to do once again, is what I feel. And then I think आगे बढ़ के it's a good sign if they move on from Andre Russell and Sunil Narayan. I don't know what you guys think. Paravi saying their foreign players are old. I completely agree. And don't forget there's Tim Saudi as well. Umesh Yadav is also 35 years old, if I'm not wrong. So I think yeah, these decisions will need to be taken, because Sunil Narayan is batting at number 7. The middle order, if you see, of Shreyas Iyer, Nitish Rana, Rinku Singh, Andre Russell, Sunil Nareen, Shardul Thakur, the short ball struggles are out there. It is very visible. So hopefully the teams, they rectify the situation अपने बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि it is very visible कि यार ये जो मिडिल ऑर्डर है, this will struggle against pace.
Viplovi saying Quicker should play leggy Suyash and left arm pacer Kulwan Kejrolia. I don't know. This is what I feel is going to be the starting 11. Uh, Worst critic KKR bottom three because they don't have Green Sam or Ben Stokes. नहीं यार ये नहीं बोला था मैंने. Statement मत घुमा please. मेरे को खाली ये टीम के पास बैकअप्स एंड दे डोंट हैव मेनी ऑप्शंस. दैट इज द ओनली रीजन आई फील कि these guys will finish in the bottom three. Yeah. Rahul is saying till next mega auction you will see Russell and Nareen easily. Hopefully I don't. Uh, Short ball issue will be there. X factor will be Gurbaz. I'm a huge fan of that guy. Yeah. और कोई कमेंट है तो बता दो. केकेआर के ऊपर ले लेता हूँ मैं फटाफट. Revenue Singh Chandrakant Pandit sir can make a miracle out of this team, hopefully, and I think he can do it with the domestic talent which he has. So I don't know whether N Jagadishan will play or not. Hopefully he plays because I am a huge fan of N Jagadishan, and जो domestic season जा रहा है बंदे का, I think he deserves to be in the 11. So mm, what else? Yeah, I think that's pretty much it for KKR's 11. Next team कौन सी ले फटाफट बता दो, and we'll get a third man team's member as well. I think PBKS is what Ujjwal is saying. So yeah, okay, let's jump on to Punjab Kings. Where is Punjab Kings? Punjab Kings किधर है? यहाँ पे है. इसी के साथ let's welcome Ankit on the stream as well. Video like कर दो guys please. फटाफट जितने भी लोग देख रहे हैं, 40 लोग देख रहे हैं, फटाफट वीडियो लाइक कर दो. लेट्स टारगेट 50 लाइक्स फर्स्ट. 40 लोग कर दोगे तो आई थिंक विल बी वेरी क्लोज टू 50. प्लीज कर दो. कुछ नहीं होगा यार. बाकी लोग जो जिनको नहीं पता चैनल के बारे में, दिल गेट टू नो, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द चैट एज वेल. सो बस ये करना हम लोग, और कुछ नहीं मांग रहे. वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस फटाफट. हाय अंकित, होप यू आर डूइंग Yeah, रियली वेल. yeah. What do you make of the Punjab 11? Yeah, I feel Abhinav, if you see Punjab Kings 11, especially even the whole core, I think we can say this is one of the best and strongest cores. Look at the four overseas options. Now you got Johnny Bairstow, then you got Liam Livingston, Sam Curran, Kagiso Rabada. Pretty balanced, two top order batters. Then you got Sam Curran who can bat and also ball. Then Kagiso Rabada with the ball. Their bowling looks sorted. So एक ऐसी 11 जहाँ पे सब कुछ है. ओवरसीज तो बेस्ट ऑप्शन है. And even the Indian option, Shikhar Dhawan as an opener, he's explosive. Bowling में then you have got Rahul Chhar, Arshdeep Singh as a death bowler, बहुत evolve हुए. So gun team. Now that's the thing with Punjab Kings की auction बहुत अच्छा जाता है, but now it's all about executing the plans and implementing all the things and strategies that they are gonna go through this season. So I'm hoping that this thing now, this is the best chance for someone like Punjab Kings to make it to the playoffs. So I'm hoping कि इस बार तो Punjab Kings, I mean, the first and basic motto should be to reach the playoffs. I mean, strong team. I don't see any loopholes. What about you? I see a lot of loopholes, man. मैं आई थिंक द इंडियन कंटिजेंट जो आई थिंक जो प्रॉब्लम उनके पास थी, वही सेम प्रॉब्लम ऑलमोस्ट अभी भी है. फॉर सम रीजन आई फील वो जो इंडियन जो प्लेयर्स हैं ना इनके पास, दे डोंट हैव गुड इंडियन प्लेयर्स इज व्हाट आई फील कंपेयर टू द अदर टीम्स. जितेश शर्मा, शाहरुख खान, ऋषि धवन, प्रभसिमरन सिंह, राजअंगद बावा, वो जो फिनिशर वाला जो बीच का जो है ना आफ्टर लियम लिविंगस्टन वाली जगह, yes, Sam Curran is there, but uske around they need one more good player as well. Yeah. क्योंकि The I bowling still looks sorted. yeah, yeah, I completely agree with this Raven comment. Middle order except Liam Neeson is still inexperienced. There is no three is a big concern, and the number three is a big concern. Yeah, that is the reason हमने यहाँ पे जॉनी बेस्टो को इसलिए रखा था क्योंकि हम लोग को यहाँ पे प्रभसिमरन सिंह बिठा रहे इनका ट्राई कर रहे थे, बट वो अच्छी नहीं लग रही थी 11. That is the reason we only took him to number three. But yeah, I think a struggling Shikhar Dhawan are out of form Indian players. I think Rishi Dhawan is still maintained his form. That is good. Uh, but I still feel they have some loopholes in the 11. क्योंकि सैम करन के आने के बाद मेरे को लग रहा था कि सब सॉल्व हो जाएगा, but while making the 11, I still feel कि there is something lacking in the 11. Yeah, I feel ki, the kind of season someone like Jitesh Sharma had. I mean, the last couple of games he played, it was definitely looking promising. But as you mentioned, I mean, if we are expecting Shah Rukh Khan to do something that he has done in domestic seasons for a while, so if he implements that here on this level, I think finishing can be sorted. But that number three spot or that opening slot, as you mentioned, I think that is a big worry.
because they can't fit someone like Rajapaksha. So because of the overseas options, they already have four overseas options, and they can't fit the fifth one. So that's one issue. So number three player is an issue for them, and Shah Rukh Khan I think will have to turn up this season for Punjab Kings as a finisher is what I feel. Or rather, they can utilize the impactful player very well going into the season. Okay. I think impact players may. I think one of these three might go out, and a player like Raj Angat, Bawa, Atharva Taide, these guys can. Hmm. I mean, and I think प्रोनीत के 11 में भी वही एक चेंज है, अथर्व टाइडे और एक बलतेज सिंह का लास्ट में है। मेरे को पता नहीं यार, ये बाकी के जो खरीदे गए हैं ना, जो 20-20 लाख में जो प्लेयर्स, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट कि कैसा Yeah. खेलते हैं वो फॉर देयर स्टेट्स एज वेल, बट या I still see some problems in this 11. Partha Singh, PBKs might have good players, but they keep on changing the captains, just a mix of which is out of order. Hmm. Yeah. Hmm. और क्या कमेंट है, अगर कुछ कमेंट है पंजाब के इस बारे में, या पीबीके हैज स्पॉट टू फिल एट नंबर 3 बिफोर द ऑक्शन, आफ्टर ऑक्शन दे स्टिल हैव द नंबर 3। हाँ, तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स अभी भी हैं विद पंजाब किंग्स। सो होपफुली दे सॉल्व इट आउट विद डिफरेंट अप्रोचेस, कि यार नंबर 3 पे प्रॉब्लम आने ही ना दे वो। मे बी दे फिनिश वेल इन मोस्ट ऑफ द गेम्स एंड मूव ऑन फ्रॉम दैट नंबर 3 का वरी। ओके, देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट टीम कौन सी लें, फटाफट बता दो चैट में। सीएसके की प्लेइंग 11। ओके, चलो सीएसके पे बात करते हैं अपन लोग। सीएसके बढ़िया तो लग रही है टीम काफी। हाँ, आई थिंक शिवराज ने जो कमेंट किया है, रजा शुड बी इन द 11, बट वेयर डू यू प्ले हिम, दैट इज द क्वेश्चन। शिवराज, I wanted Sikandar Raza to be a part of the 11, but where do you play Sikandar Raza in the 11? Because Sam Curran will play, Kagiso Rabada will play, Livingston will play, Johnny Bairstow will play. So, which is the player you think is going out for Punjab Kings? Let me know in the chat. I'll take that comment. But yeah, moving on to CSK. Supriya, हाँ हमने शुरू कर लिया, CSK के 11 बता रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा स्पैम मत करना। CSK is probable 11 is this is what we feel. Ruturaj Gaikwad, Devon Conway, Moin Ali, Ambati Raidu, Ben Stokes, MS Dhoni, Jadeja, Pretorius, Chahar, Mukesh Chaudhary, प्रशांत सोलंकी, क्योंकि वो मेरा दोस्त है इसलिए मैंने डाला नाम, बाकी और कुछ नहीं। बट या, में what else can be done if Mahesh Theekshana has to play? What do you think? Who do you think goes out if Mahesh I feel Theekshana? initially this is the probable 11. I think we can even see when CSK plays their initial matches because I think Thiksana is missing out on some couple of games initially. So look sorted. I'm hoping that Dwayne Pretorius starts because he's the only death bowler I see in this team. I don't consider. I mean, there were many CSK fans saying that Stokes is a replacement of Dwayne Bravo. He's not a replacement, I would say. He's Ben Stokes. I mean, that's enough. He's not a replacement of anyone. So I feel that bowling is a worry because Bravo is not there. So I see Dwayne Pretorius to be playing, but once Thiksana comes, I feel one thing Mahesh Thiksana can sort, but I'm not sure. Because I'm thinking that Mahesh Thiksana as an overseas player or as a Sri Lankan player, आई थिंक अभी ना हमने देखा है कि बहुत सारे फॉर श्रीलंका ही इज बॉलिंग इन दैट डेथ ओवर 16 to 20. So if you feel someone like Mahesh Dixon instead of Dwayne Pretorius, the one thing is when you play in Chepauk आपको तीन स्पिनर्स मिल जाएंगे और डेथ बॉलिंग भी मिल जाएगी. बट द थिंग इज कि बहुत यंग है महेश डिक्सन है एंड देन हालांकि 2 ओवर्स ही 16 to 20 के बीच अगर डाल पाए एंड अच्छी अच्छी तरीके से डाल पाए सो दैट थिंग कैन बी सॉर्टेड. But I think there should be another Indian pacer who should resolve this issue for CSK. Deepak Char, I'm not really 100% certain. Maybe Mukesh Chaudhary or Ben Stokes. I don't think so. MSD will think Stokes as that bowling option. Apart from that, opening looks sorted. I'm hoping that Ruturaj Conway have a great and splendid season. Middle order, Moen, Raidu, Stokes, Dhoni looks good. Even Jadeja as an finisher. So overall looks good. The only concern will be कि that bowling कौन डालेगा और कैसे ये 4 overseas options को MSD काफी अच्छे से utilize करेंगे. Hopefully, but I think एक out of the box thinking है for some reason. I think अगर Ben Stokes से open करा लिया, because Rajasthan Royals did that with him and he scored Hmm. runs. So अगर Ben Stokes open करता है, Conway if he goes out, then you can add like a Mahesh Theekshana in the 11. But Yeah.
don't know. I mean, that's a very long shot because Devon Conway is doing really, really well in the T20 format. Rahul is saying CSK's main player from the middle order is still Raido. If he has one good season, they'll go to playoffs in 2021. Also, four players won them four. Yeah, exactly. I Hmm. think, and Raidu not playing domestic cricket, the long form, I think that also is a concern for CSK. Don't know whether they are thinking about that because they have bought Ajinkya Rahane for 50 lakhs. I don't know whether they'll play him or not. So let's see. Aditya saying it will be very exciting to see Abhinav, how Ben one more thing I would like to know from you. Ben Stokes as a future CSK captain. possible. Ab lag raha hai, I think it is possible, in my opinion. But it's a long shot because when Dhoni leaves, that's a huge gap to fill, and I think indications are there that this could be MS's last season. But yeah, if he leaves, I think yeah I can see क्योंकि इसके पहले ऋतुराज गायकवाड was the option क्योंकि जडेजा ने तो मना कर दिया था कैप्टेंसी करने से. So let's see क्या होता है. Aditya saying it will be very exciting to see how Ben Stokes plays at Chepauk on that turning track. Yeah, but if there's one Mhm. player who would you take in the pressure situation, it is Ben Stokes in the T20 Yeah. format. हालांकि वो बंदा कुछ ना करे पूरे टूर्नामेंट में, he will win you that one or two odd games under pressure जब आप struggle कर रहे होगे. And we have seen that with the England team as well. This World Cup final में I think he was the guy who was standing alone क्योंकि पता नहीं है कि वो इंग्लैंड हार सकती थी वो मैच, but this guy didn't give up. And not just about this final, I think very recently in T20 format, Ben Stokes has been their guy. So I think Mhm. CSK fans should be very happy with Ben Stokes coming in their team. Supriya saying Rituraj, Devon Conway, Ben Stokes, Ambati Raidu, Shivam Dube, MS Dhoni, Jadeja, Pretorius Tikshana, दीपक चहर एंड मुकेश चौधरी. इसमें एक प्लेयर मोइन अली का नाम नहीं रखा है यार, वो तो बहुत बड़ा एसेट है. मोइन अली प्ले मोस्ट ऑफ द गेम्स. मोइन Yeah. अली इज नॉट यू नो गेटिंग आउट ऑफ द 11 मेरे हिसाब से तो. और अगर चले जाते देन आई I'm थिंक just इट्स wondering if Moeen Ali at Chepauk will be a totally different thing as a bowler, even as a batter. Parth, no, we haven't covered RR yet. We've only covered MI, Punjab, and CSK as the third one. So, और Yeah. कोई कमेंट है? अभिषेक सिंह फ्यूचर कैप्टन अजिंक्य रहाणे. आई डोंट नो कौन से फॉर्मेट, अगर सीएसके प्लान कर रही है कि हम एक टेस्ट फॉर्मेट की भी टीम बनाएंगे तो मे बी अजिंक्य रहाणे कुड बी दैट ऑप्शन. एनी अदर सीएसके कमेंट में कुछ दिख तो नहीं रहे हैं वैसे. सो bowling is not reliable. This is a good chasing team. Yeah, bowling के थोड़ी worries हैं. Yeah. Uh, okay, then next team. I think in next team everyone wants to do SRH. Okay, we'll do SRH. Yeah, this is the SRH team. रजा भाई, हमने ना एमआई की बात करी थी स्टार्टिंग में स्ट्रीम के, सो थोड़ा पीछे रिवाइंड कर लोगे तो मिल जाएगा. एंड अगर अभी अभी ज्वाइन करिए स्ट्रीम तो प्लीज वीडियो लाइक कर दो यार सब लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, पता चल जाएगा कभी हम लोग लाइव आने वाले हैं नेक्स्ट टाइम. ओके दिनेश, हमने एसआरएच की टीम ले लिया. आपका थोड़ा स्पैम शायद बंद हो जाए इसलिए ले लिया हमने. SRH probable playing 11 by us is this. Also, who do you think is the captain now of this team? Mayank Agarwal, Aiden Markram, Bhuvaneshwar Kumar, or Washington Sundar? Long shot, Washington I Sundar का नाम personally नहीं. think the kind of thinking SRH management had in last 6 or 7 years. I think they like overseas players, overseas captains. So in that way, I'm thinking Adam Markram is a tempting option. I think he has done that leadership for someone like South Africa as well. So has that little bit of experience, and I think this is a team. I think he can lead it well. But of course, there were news that maybe Bhuvneshwar Kumar is a likely possibility. So tempting option because Bowie has been with the team for a while, 6 7 years. So he knows the management of SRH well and knows the culture, knows how to handle it. So tempting two options. I'm hoping. I don't think that this team will go for someone like Mayank. They will just like to continue Mayank to free flow with him as a batter and no additional pressure as a captain. So I don't think the only two tempting options Markram, Bhuvaneshwar Kumar. So that won't make a difference. But overall, top order really looks sorted. The only thing is Henry Klassen, Jane Phillips. Don't mind. I think Henry Klassen will be a more good option. So they have sorted that. Bowling was anyway sorted before the auction, so that is one good thing. Harry Brook. अभी no, that's the thing. I mean, इन्होंने अच्छा किया. I mean, but of course I agreed to that. But इन्होंने अच्छा पाकिस्तान में किया. Now I'm not, underestimating him, but.
World Harry Cup Brook was is not going to that good be of the star someone like player in Harry this Kane. IPL auction. I think that's a great pick in Harry Brook. I can see him playing really well for SRH in this team. Probably the star player in this team if possible. But my Yeah, captaincy option, I don't know. People are saying about Markram a lot on social media. I don't know, but फिर उससे वो हो जाए कि then if उसका season खराब जाता है then he becomes a liability. क्योंकि केन विलियमसन के साथ भी ऐसा ही हुआ था. ही वॉज मेड एन ओवरसीज कैप्टन एंड देन उसको खिलाना पड़ा था ओनली बिकॉज ही वाज द कैप्टन. नाउ इफ यू मेक मयंक अग्रवाल द कैप्टन, यू हैव अ लॉन्ग टर्म कैप्टन. अगर मार्करम का सीजन खराब जाता है, यू माइट थिंक ऑफ रिलीजिंग हिम लेटर ऑन एज वेल. सो दैट इज द ओनली सेफ ऑप्शन आई वुड से एसआरएच शुड गो फॉर इन मयंक अग्रवाल. यस, मार्करम mm, कैन बी दैट वाइस कैप्टन रोल, जो 3 या 4 प्लेयर होते हैं जो लीड संभालते हैं, yeah. डिसीजन लेते हैं. आई थिंक ही कुड बी दैट दैट प्लेयर. बट या, शिवराज का जो कमेंट है ना, मैं The same thing, happened with Mayank. I mean, even he's an Indian player. The same thing happened with him at Punjab Kings. So that's one thing. I think then Bowie might be a safe option for me if an Indian player is likely to be the captain of SRH. So in that way, I'm thinking Bhuvneshwar Kumar. But Mayank, I'm not pretty sure now. New franchise and one bad year as a captain, which was the last year. So let's see. I mean, what happens? Let's hope for नहीं, the best for भूवी him. को तो नहीं बनाएंगे कैप्टन, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक मयंक और एडन मार्करम में से एक बनेगा. बट वो ये मार्करम अगर बनता है देन इट्स अ लॉन्ग शॉट, क्योंकि अगर उसका सीजन खराब जाता है देन यू स्टिल हैव टू प्ले हिम 14 गेम्स. और अगर मयंक के साथ जाता है देन देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू ड्रॉप हिम. A lot of people in the chat in the saying Henrik Larsson over Glenn Phillips, but Glenn Phillips has been an asset, man, for New Zealand in the T20 format. So I think I don't know why I feel Glenn Phillips will play in the 11, but Adil Rashid will play. Yeah, I can see him playing because they lack spinners. So Adil Rashid will play. यार है तो यार बॉलिंग ऑप्शन. कौन बोल रहा था कि यार एसआरएच के पास 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं है? नटराजन कैन बोल, मलिक कैन बोल, भुवी कैन बोल, राशिद Even कैन Adam Markram. बोल, मार्करम कैन बोल, अभिषेक शर्मा कैन बोल. सो दे हैव इनफ ऑप्शंस यार. Seven. राहुल त्रिपाठी, या आई थिंक नंबर 3, 1 2 3 में से कहीं पे भी खेल रहे राहुल त्रिपाठी, ही विल डू रियली वेल. सो लेट्स सी कि क्या होता है विद एसआरएच. और अगर कोई कमेंट है, आदित्य सिंह, सरप्राइजिंगली एसआरएच मेड अ वेरी गुड एसआरएच स्क्वाड. या दिस टाइम आई वी विल गिव देम कि उनने अच्छी स्क्वाड बना ली है. ऑलराउंडर नहीं है अच्छे यार, बट ऑल्सो द थिंग इज कि यू वोंट बी गेटिंग एवरीथिंग इन वन टीम. ओके, यू वोंट बी गेटिंग ग्रेट बैटर्स, ग्रेट बॉलर्स, ग्रेट ऑलराउंडर्स, ग्रेट विकेट कीपर्स. दैट्स नॉट पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट. बट या, विद व्हाट दे हैड, उसके हिसाब से आई थिंक दिस 11 लुक्स गुड मेरे हिसाब से. Hmm. uh, और कोई कमेंट है क्या एसआरएच का? मैं देख रहा हूँ. आदिल रशीद इज वेरी एक्सपेंसिव इन द T20 फॉर्मेट, बट और कौन है यार इनके पास? इनने एक हाथ स्पिनर आई थिंक और खरीदा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मेरे को याद नहीं Mayank आ रहा. Markande. क्या? Mayank Markande. मार्कंडे, या ही कैन प्ले, बट आई वुड स्टिल प्रेफर यार आदिल रशीद, बिकॉज ही इज अ विकेट टेकर, इवन दो कि खराब वो करे, क्या बोलते हैं, इकोनॉमी रहे. बट या, Hmm. आई थिंक दिस इज व्हाट आई वुड यूज द वर्ड विच सत्यम इज सेइंग. या, बैलेंस टीम है एसआरएच. Rahul is also saying SRH analysts played major role in selecting good squad. Gaurav Sab. So yeah, I think they did not have an analyst before. I think last season tak. I think now they have got one analyst in. So I think he did really well. Yeah, Akil Hussain is one name jo unne kharida as well. Akil Hussain is not a bad shout as well. So overall, I think SRH is a decent squad this season. So I think Hmm. most of the people in the chat agree as well. Positive comments ही दिख रहे हैं right now SRH के ज़्यादा. थोड़े बहुत ही Yeah. नेगेटिव कमेंट्स है, तो आई थिंक वी कैन मूव ऑन फ्रॉम एसआरएच. नेक्स्ट टीम प्लीज फटाफट बता दो. Kunal is saying SRH could do good if their Indian core performs good. Yeah, but their Indian core is pretty good मेरे हिसाब से. तो यार मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, भुवी, उमरान, नटराजन, I think that's a good Indian 11, Indian contingent to have. Yeah. कौन सी लें यार अभी? आरआर, आरसीबी, एलएसजी, 3 नाम आ गए अभी. ठीक है, जो अभी मेरे को स्लाइड में पहले दिखेगी ना, मैं वो ले लेता हूँ. ठीक है, आरसीबी, चलो आरसीबी ले लेते हैं. ओके. गौरव सॉरी यार, मेरे को ना दिल्ली का मैं आऊंगा, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ तेरा कमेंट, बट वो मेरे को मिल नहीं पा रही थी फटाफट टीम. बट ठीक है, आरसीबी के फटाफट आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इनने ज्यादा चेंजेस करे नहीं है. तो अपन लोग नेक्स्ट टीम दिल्ली लेते हैं.
and then we'll move on to Gujarat or the other team and LSG as well. RCB's probable 11. I think this was the 11 before the game, before the auction, and it is still the 11 after the auction because they did not. I think उनने पहले एक दो घंटे तो कुछ करा नहीं था ऑक्शन में, खाली टाइम पास करने आए थे ऐसा लग रहा था. So this is what we think will be the 11, but they have got decent backups, man. I think Will Jacks is a great buy for RCB. So is Reece Topley, क्योंकि अगर जॉस हेजलवुड नहीं रहे काफी लंबे समय या तो अगर उन्हें गेम्स मिस करें, सो आई थिंक रीस टॉपली इज अ ग्रेट ऑप्शन. ग्लेन मैक्सवेल की अगर इंजरी बढ़ जाती है या वो रिकवर नहीं कर पाते हैं, देन आई थिंक विल जैक्स इज एन आइडियल रिप्लेसमेंट, क्योंकि इसके पास हिटिंग वाली पावर है. On a small ground like Chinnaswamy, I think Will Jacks will be an asset. Or what then happens is if Will Jacks opens with the Fab Duplessis, that gives Virat Kohli the opportunity to bat at his ideal position, which is number 3. So I think let's see क्या होता है with Will I Jacks feel because कि even I feel कि not just if they add Will Jacks, I feel कि they can add Anuj Rawat as an opener. Of course, he didn't had a great season last year, but I feel कि that Virat Kohli as an opener. I mean, I'm not sure the kind of season or the last couple of months he had as an at number three in the shortest format of the game. I feel at number three will be impactful, and then I will be pushing every player down the order. So Akashdeep misses out, and Anuj Rawat comes in the opening position. They still have 6 to 7 bowling options, and I'm not sure with Akashdeep, Mohammad Siraj, Josh Hazelwood, Harshal Patel, four pacers. I mean, I'm not sure in any of the pacers in the India. I don't think going with four pacers is an ideal option. So I think someone like Anuj Rawat as an opener and Virat Kohli at three, Patidar at four, Maxwell at five looks still convenient. So I'm hoping that's the thing they should do, adding someone like Anuj Rawat as an opener. आई डोंट थिंक सो मैन. अनुज रावत को ट्राई करा था ना इन लोग ने एज एन ओपनर. दैट इज द रीजन Yeah. दे वेंट फॉर विराट कोहली वंस अगेन. सो आई डोंट नो वेदर दे विल गो बैक टू अनुज रावत, बट आदित्य सिंह, डोंट फॉरगेट फिन एलन एज एन ओपनर. Yeah, there is one option, he is one option as well, and I would love to see Finn Allen play in the IPL, man. I think जो T20 वर्ल्ड कप के स्टार्ट दिया था फिन एलन ने, आई थिंक अ स्टार्ट like that for RCB in the IPL, the fans won't complain for sure. Middle order problem, yeah, I think, yeah, this I agree, Anshul, थोड़ा problem है because दिनेश कार्तिक से कैन यू एक्सपेक्ट द सेम सीजन? आई डोंट थिंक सो. Mhm. शाहबाज अहमद पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी. वरिंदु हसरंगा, आई कंसिडर हिम मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर रादर देन अ बैटिंग ऑलराउंडर. रजत पाटीदार तो विल प्ले इन द 11, सो आई थिंक लेट्स सी क्या करते हैं. शुभम इज सेइंग बैड बॉलिंग लाइनअप. यार अभी इससे बेटर क्या चाहिए होगी? मतलब दिस इज नॉट बैड, आई वुड से इट्स अ डिसेंट बॉलिंग लाइनअप यार. आई मीन ये बॉलिंग लाइनअप की वजह से दे हैव मेड इट टू द प्लेऑफ्स, सो आई थिंक कुछ तो रीजन होगा. uh, Yeah. इस I feel आकाश. कि even यहाँ पे the kind of thing in the last 2 days I had कि many people and even most of the RCB fans I will say they were mentioning that they would like to see someone like Reece Topley ahead of Josh Hazelwood because I'm not sure about Josh Hazelwood's fitness because he's likely missing out the Test series of the ongoing Is he series missing between out or is he Brazil and dropped? South Africa. क्योंकि Scott Boland will play tonight. Tonight मतलब कल सुबह. Yeah, As the at the MCG instead of Josh Hazelwood, because कहीं yeah. तो मैंने पढ़ा था, I don't know how true is it that Josh Hazelwood was almost fit to play the game. I don't know how true is that news, but But let's even see. tactically, that's not a bad choice to play Reece Topley. I mean, he Yeah, sorts he's out a great the asset, man. I bowling. wanted Reece Topley instead of Jason Behrendorff for Mumbai Indians, even though थोड़ा injury Yeah. prone है, but with the recent T20 form जो Reece Topley का है, I think he can get in this 11 for sure. Backups are good, Yes. man. अगर आपका Josh Hazelwood first option है, तो then your second is Reece Topley. If Glenn Maxwell is your first option, second is Will Jacks. तो Finn Yeah. Allen का इनके पास Just one question. I mean, the because Hasaranga is likely to miss out on the initial game, and if RCB, plays on someone like or a pitch like Chinnaswamy, who makes it to their squad, especially in the spin department. Now, Will Jacks did it in Pakistan, 5 wicket haul, but that's not. I mean, that's not going to happen every time, even if you're part timer. So, as a spin option, do you think that the only option will be Shahbaz Ahmad, or they will have to go with any other spinner? And if yes, who is going to be that guy for them? I mean, Chinnaswamy, we all know. I mean, that's going to be tough for bowlers to take on. yeah, but I think it's not just about that thing, क्योंकि Chahal was very successful at Chinnaswamy,
And Hasaranga, he is probably ranked very high right now in Yeah. terms of rankings. जो भी है उनकी जो आईसीसी की रैंकिंग होती है उसमें काफी ऊपर है हसरंगा. तो I wouldn't complain with this bowling lineup यार. I mean, I don't know why people are against this bowling lineup, क्योंकि डिसेंट यार. अभी आप इसमें काफी सारे चेंजेस कर सकते हो. ऑफ कोर्स Yeah. इफ रीस टोपली कम्स इन, हेजलवुड गोज आउट, यू गेट आकाशदीप को हटा के इफ यू गेट लाइक से महिपाल लोमरो, किसने कमेंट किया था यहाँ पे, Yeah. नंबर 5, दैट स्ट्रेंथens द bowling, sorry, the batting, and he can bowl off spin as well. So I think Hmm. it's still a decent squad. I won't complain क्योंकि उनने सेम स्क्वाड Yeah. रिटेन करी है. उन्होंने ज्यादा साइनिंग्स नहीं करे, और जो साइनिंग्स करे दे आर नॉट दैट बैड. आई थिंक डेविड विल इज वन मोर ऑप्शन जो इनके पास है पहले से रैंक्स में अपने एज बैकअप. तो आई थिंक दैट्स द बैकअप्स, फॉरेन बैकअप्स, विल जैक्स, डेविड विली, रीस टॉपली, फिन एलन. I think you can't complain much about these guys. Yeah. Hmm. Aditya Yes. Singh Harshal has never performed in Chinnaswamy, and we know Siraj that he's a run machine through his recent form is good, but you still cannot trust Siraj and Harshal on that Chinnaswamy ground. Uh, yeah, the thing is, it's not only about Siraj, but the ground is a trouble for bowlers overall. कुछ भी आप bowling करो, it is a kind of a mine for Hmm. any bowler. So I think that is where your skills come in. Or Mohammad Siraj ka recent, I think he has developed over the years. Every season after season, Mohammad Siraj has developed in certain areas. So I think हाँ वो खेल सकते हैं यार वहाँ पे. एंड ऐसा तो नहीं है कि अभी आपको इसके चक्कर में ग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, आपको खेलना वहीं पर ही है. एंड यू आर विनिंग मैचेस यार वहाँ पे, ऐसा कुछ वो नहीं है. या दिस इज वन नेम जो आई थिंक इनके रैंक्स में है फिर से. यार प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो, हमारे से किसी ने तो कमेंट किया है यहाँ पे. Mahipal Lomror as impact player, oh yeah, good option. Yeah. क्योंकि impact player pretty much says कि यार आप 12 प्लेयर खिला रहे हो और बस 4 फॉरेनर हैं. आप अगर Hmm. आप 3 फॉरेनर खिलाते हो देन योर इम्पैक्ट प्लेयर कुड बी अ फॉरेनर. अगर 4 आपके फॉरेनर खेल रहे हैं ऑलरेडी 11 में, देन यू कैनॉट हैव अ फॉरेनर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. सो आई थिंक दैट इज व्हाट द रूल इज. और महिपाल लोमरा इज नॉट अ बैड ऑप्शन मैन. He can bat in that middle order anywhere at number 4, 5 or 6, and he can give you 1 or 2 overs as well. So not a bad impact player to have मेरे हिसाब से. एक चीज समझनी Hmm. पड़ेगी यार कि हर टीम को ना सब कुछ नहीं मिलेगा. You have Yeah. to make you have to take हार्श कॉल्स नहीं कहूंगा मैं, डिफरेंट कॉल्स, क्योंकि दैट इज व्हाट द टीम मैनेजमेंट इज फॉर. कि यार अब कुछ Hmm. नया एक्सपेरिमेंटल कॉल्स जो होता है, आई थिंक वो ट्राई करना पड़ता है अलग अलग टीम्स को. सो आई थिंक हर टीम को सब कुछ नहीं मिलेगा इज व्हाट आई फील. एंड आई थिंक आरसीबी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देयर बेसिस. सो लेट्स नॉट कंप्लेन मच, क्योंकि मैं तो आरसीबी का फैन भी नहीं हूँ यार. मैं तो फिर भी मेरे को लग रहा है कि दिस इज स्टिल इट इज स्टिल अ डिसेंट स्क्वाड. And even if Sharma misses out, I think someone like Karan Sharma can do the job with the leg spin. So that's the only tempting option initially they will have to go with. So yeah, and pace attack looks good. I feel that Siraj and Narshal will do well at Chinnaswamy. Yeah, Deepak is saying if Glenn Maxwell misses out, Finn Allen is a good option to have. Virat at number 3 will be good. Yeah, Maybe Will Jack's a better option. Will Jacks और फिन एलन यार दोनों अच्छे हैं. आई थिंक विल जैक्स इज अ स्मार्ट बाय दिल्ली, सॉरी बाय आरसीबी. तो अगर और कुछ आरसीबी की कुछ कमेंट है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो. शोमी सिंह टेस्ट बॉलर्स यार, बट दे बीन गेटिंग विकेट्स यार. आई मीन ओनली थिंग इज कि हर्षल पटेल का जो रीसेंट फॉर्म है दैट कुड बी अ बिट ऑफ वरी, बट अदरवाइज आई थिंक Yeah. दिस इज स्टिल अ गुड साइड. हाँ यार गौरव, अभी मैं नेक्स्ट दिल्ली के उस पर ही जा रहा हूँ, डोंट वरी. दिल्ली की टीम के ऊपर जाते हैं, तो अगर कुछ कमेंट नहीं है तो दिल्ली, आरआर एंड देन गुजरात विल टेक. ठीक है, इतने मैंने चैट में बहुत सारे देख लिए, इसलिए मैं बस वो बता रहा हूँ. दिल्ली की 11 कहाँ है? या दिस इज द 11 विद दिल्ली. हाँ, 11 हम लोग आरआर की भी लेंगे, बिकॉज आरआर की इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि देयर इज ओनली जस्ट वन स्लॉट जो उन्होंने भर लिया है एकदम अच्छे से. दैट इज द ओनली रीजन विल टेक इट इन द दिल्ली. डीसी's प्रॉपर्टी 11 इज, व्हाट डू यू थिंक? मैंने यशदुल को इसलिए रखा नंबर 5 में बिकॉज व्हेन विराट कोहली, मैं ये नहीं कह रहा कि यशदुल लग रहा है विराट कोहली है, बट विराट कोहली व्हेन फॉर आरसीबी, वो भी 4-5 पे शुरू करी थी एंड धीरे धीरे ही वेंट अप. और देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट रायली रूसो टू प्ले, Hmm. बट वेयर डज ही प्ले? दैट इज द क्वेश्चन. रॉबमन पॉवेल अगर बाहर जाते देन दे डू नॉट हैव लाइक अ बिग हिटर इन द मिडिल. मिचेल मार्श को या तो वो काम करना पड़ेगा एंड देन रूसो गोज अप द Yeah. ऑर्डर. आई डोंट नो दिल्ली फैंस वुड वांट दैट. But what do you think of this 11? I still feel they're lacking that middle order, lower middle order finishing wala yaar. Yeah.
Even I feel the same. I mean, I feel कि top order look sorted. I mean, Warner, Prithvi Shaw, Mitchell Marsh. I mean, explosiveness है top order में. Then, but Rishabh Pant, Yashdul. I mean, I'm hoping कि Rishabh Pant should have a great season. I think if Delhi has to progress through that playoffs or to get there closer to the maiden IPL title. Yash Dul, I'm not sure now will he play because I feel that Manish Pandey है 5 पे and I feel कि इस बार वो role उनको मिलेगा जहाँ पे he will be asked that to finish matches for Delhi. I mean at number 5, so I feel maybe a likely possibility of Manish Pandey playing, but Robman Powell was promising last season as a finisher, so I'm hoping that he should be more better than he was last season. Lalit Yadav at number 7, I don't think he will be playing because then if you look the bowling looks with only three pacers, and I feel that even Khalil Ahmed will be playing because he had a great season last year for Delhi. So yeah, bowling they can still sort out, but lower middle order and the middle order, I think that's one thing will be a very key role and will be the deciding factor for Delhi will they progress or not. So this is the only issue I think they will have to sort out. यार Players will have to step मनीष up. पांडे खेल तो सकता है बट वो ना नंबर 5 पे नहीं खेल सकता। एसआरएच ने उसे इसलिए जाने दिया कि उसके नीचे रन नहीं बन रहे और वो 3 नंबर पे आके Yeah. भी कुछ खास कर नहीं रहा था। तो इफ ही प्लेज ही हैज टू प्ले इन द टॉप 4 एंड देन ऋषभ पंत गोज़ डाउन द But ऑर्डर even he इसलिए has मैं done यश well का for बात कर even I saw in even the way he started his IPL career, and whenever he played for India at number 5, number 6, he या scored a बट इज नॉट century. द But सेम he has प्लेयर done यार। that good ही इज job. नॉट द सेम So प्लेयर maybe दैट यू हैव that's टू the अंडरस्टैंड strategy. कि I कहाँ don't पे think वो playing in वहीं पे first. लैग कर रहा था। क्योंकि एसआरएच आल्सो लेट हिम गो क्योंकि उसके रन बन ही नहीं रहे थे नंबर 3 4 पे भी। सो Yeah. ही वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम और आई थिंक मनीष पांडे नंबर 5 पे खेला तो दिल्ली के लिए प्रॉब्लम है। दैट इज द रीजन आई पुट यश दुल देयर एंड देयर इज वन मुकेश कुमार इफ आई एम नॉट रॉन्ग if in this 11 In the पता नहीं pace attack. मुकेश कुमार यही टीम में है क्या? हाँ आई थिंक यही टीम में है। he was very close to getting into that India A वाला side. I think खेल भी चुके हैं but the Indian side के इसमें हमेशा रहते हैं right now in the recent some months past months. So मुकेश कुमार yes he will get in the 11. Sorry हमने उनका नाम नहीं डाला है but yeah I think मुकेश Yeah. कुमार will play और अच्छा खासा खर्चा किया है 5.5 करोड़ का खर्चा किया है I मुकेश don't कुमार। see even here Lalit Yadav playing because then Lalit Yadav is the fifth bowler of them. So that's one issue. I don't see him playing, and even Aman Khan, I don't feel initially will start them. Khalil Ahmed, Mukesh Kumar, they have that like so, and Khalil Firoz Shah Ahmed could I'm like not pretty sure क्योंकि there is very Chetan difficult. Sakaria in the 11. Kunal yeah I But think they Sarfraz didn't play had a better even in season. last season, so a bit difficult for him. Yeah. Rahul, yeah, this is the point I'm always making. If Pant wants to open for India, then he should open. But then you will they rest David Warner? I don't think so. If do Delhi Yeah, fans want to rest David Warner? I don't think so. Uh, yeah, if you aren't opening in a team, why open for India? Yeah, I agree. Manish Pandey at number 3. If he plays, then Mitchell Marsh नीचे जाएंगे. ऋषभ पंत एक नंबर नीचे जाएंगे. Uh, is it the right? I don't know. I'm still doubtful about that. गौरव ने अपनी 11 दे दी है, चल इसके लिए ले लेते हैं। मैं शॉ वार्नर मार्श पांडे एट नंबर 4 पंत एट 5 पॉवेल अमन खान mm, अक्षर कुलदीप नौरकिए मुकेश कुमार खलील अहमद या this is not a bad team but वो ये यार I don't know Manish Pandey will he play or will he not क्योंकि यार I am very eager to see how Yash Dul is developing or like a Sarfaraz Khan in the 11 as well. Manish Pandey we all know he's not getting in the Indian T20 side again. यश दुल mm, हैज अ चांस सो आई थिंक मनीष पांडे की जगह पे यश दुल को मैं खिलाना चाहूंगा। यश yeah, दुल एट नंबर 3 एंड मार्शल नंबर 4 ऋषभ एंड 5 या दिस इज वन ऑप्शन। यश दुल मनीष पांडे सरफराज खान साकरिया मुकेश कुमार इतने टैलेंट बेंच पे या बेंच पे नहीं यार खेलेंगे इसमें मुकेश कुमार विल प्ले इसमें साकरिया विल प्ले मनीष पांडे माइट गेट गेम्स यश दुल माइट गेट गेम्स सरफराज विल माइट गेट गेम्स एज वेल सो yeah. अविनाश कौन है यार पता नहीं अविनाश But कौन है क्या I आई think मीन Delhi can be that team who will try to use or utilize the impactful player rule the best they can because that's the only thing because they are lacking in that lower middle order. So they will try to rotate the bowling options and the same goes for the batting. So that's one thing I think they will have to keep an eye. Or someone like Lalit Yadav, I think even he can bat at number 5. Although didn't had a great season, but initially even the I remember the first match that was against Semi, I guess. So he and Akshar did a great job. So something like that, and hoping to back him throughout the season, or even promoting Akshar Patel at number 6, number 7. So yeah, these are the couple of options they should try to explore going into the season.
अरे फिल सॉल्ट भी तो है इनके पास, ये तो बहुत ही Yeah. बढ़िया स्मार्ट पिक है मेरे हिसाब से। आई थिंक जितना अच्छा विल जैक से, आई थिंक उससे बेटर फिल सॉल्ट है उससे, क्योंकि Hmm. फिल सॉल्ट अगर खेल गया तो देन, बट देन अगेन वन ऑफ मिचेल मार्श, डेविड वार्नर और पॉवेल विल गो आउट। नॉर्के इज प्लेइंग फॉर श्योर। वार्नर का Yeah. डिपेंड्स अ लॉट ऑन फॉर्म एज वेल, पता नहीं आज खेलेंगे 100 टेस्ट मैच अपना तो, पता नहीं फॉर्म कैसा, रीसेंट फॉर्म तो काफी खराब रहा है, बट होपफुली ही गेट्स हिज फॉर्म बैक बाय द आईपीएल। बट या आई स्टिल वांट ऋषभ पंत टू ओपन फॉर दिल्ली। और कोई कमेंट है तो बताओ। डॉक्टर विशाल पवार इज सेइंग नो प्रॉपर ऑलराउंडर इन दिल्ली। या आई थिंक ऑलराउंडर से आई वुड से मोर ऑफ लाइक अ फिनिशिंग टच नहीं है दिल्ली के टीम में, क्योंकि रोहमन पॉवल इज लाइक अ हिट एंड मिस प्लेयर। तो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, पूरे 14 गेम्स तो नहीं चलेगा, दैट एवरीवन नोस। सो आई थिंक Hmm. 14 में से अगर आप आधे भी चाहो तो आई थिंक दैट इज आल्सो नॉट प्रॉपर, नॉट पॉसिबल विद द प्लेयर लाइक रोहमन पॉवल। सो आई थिंक वो थोड़ा उधर वहां पे दम नहीं है उनके पास, लाइक शुभम इज सेइंग 5-6 नंबर का दम नहीं है। आई एग्री। सो हाँ साई, अपन लोग करेंगे। अच्छा ये कमेंट है क्या, ओके। राहुल त्रिपाठी एज कैप्टन फॉर एसआरएच, यार नॉट अ बैड ऑप्शन यार। आई थिंक अब तो डिजर्व करता है राहुल त्रिपाठी अराउंड द लीडरशिप ग्रुप। अगर कैप्टन भी नहीं बना तो आई थिंक लीडरशिप के अराउंड तो घुसा हो। Riley Yeah. Russo play, but where he plays, man, I think that is a question. Ki Riley Russo, a top order batsman overseas. If David Warner is playing, then where does Riley Russo play? क्योंकि आप दो overseas left-handed batters को आप एक टीम में खिलाना चाहोगे क्या? That is one big question. Yeah. Even though he's in great form, yeah. Rahul is saying this top three reminds me of RCB 2011 to 2017 top three. Uh, But I feel yeah, Mitchell Marsh, I think if he balls, I think, and does yeah, have but a Mitchell great Marsh पहले fit तो हो season यार, of वो bowling IPL भी miss network. कर रहे हैं अपना। सो या Yeah. मूविंग ऑन, आई थिंक नेक्स्ट टीम कौन सी लें अपन लोग। जीटी ले लेते हैं। जीटी भी मैंने केन विलियमसन को तो मेरे को लग नहीं रहा था गेम मिलेगा, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन ये अगर 11 रही तो आई थिंक इसमें इट स्टिल फील्स ओके, क्योंकि साई सुदर्शन एट नंबर 3, के एस भरत ओपन, शुभमन गिल ओपन, फिर वो वही सेम इशू हो जाता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस लैक कर रहे हैं टॉप ऑर्डर में। दैट इज द ओनली रीजन मैंने केन विलियमसन को वहां पे डाला था। हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, पता नहीं कैसा सीजन रहेगा डेविड मिलर का। टेवटिया, कैन यू एक्सपेक्ट गुड सीजंस बैक टू बैक फ्रॉम हिम? आई डोंट नो। राशिद खान at 7, Shami at 8, Sai Kishore, Yash Dayal, Alzari Joseph. Now they have a Joshua Little in the side as well. So I think Yeah. still, yeah, will they retain the title? I am a bit doubtful. Uh, आशीष नेहरा कंफर्म केन विल बी द नंबर 3। अरे फिर तो चलो तुक्का सही निकल गया यहाँ पे। But I feel that someone like Vidhiman Saha may start instead of Case Bharat. I mean, because he's someone who is a bit explosive. I mean, although isn't a consistent batter. I mean, but eventually in the last season he did fire for Gujarat. So I do see him starting instead of Case Bharat. But Abhinav, the thing is कि even अभी जैसे mention किया कि किसी ने तो mention किया था comment section में कि Kane Williamson will be batting at number 3. So माय कंसर्न इसकी शुभमन गिल या फिर इवन केस भारत हो गए, केन विलियमसन हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, दे आर द काइंड ऑफ एंकर्स। नाउ हार्दिक के साथ भी हमने देखा कि 4 पे आते थे फॉर गुजरात। आई मीन एंड ही यूज्ड टू टेक कपल ऑफ 10-15 आउट बॉल्स, देन ही यूज्ड टू स्टार्ट। एंड जो भी मैचेस गुजरात ने जीते 6 to 7 मैचेस मैंने देखा कि जो फाइनल ओवर में गए जहाँ पे आपको 6 बॉल में 26 चाहिए, 2 बॉल में 13 रन चाहिए, वो भी बन गए थे। एंड दैट्स द थिंग आई वाज डिस्कसिंग विद रोनक कि इवन रशीद खान ने एक मैच जीता था एसआरएच के अगेंस्ट, 1 बॉल में 6 रन चाहिए थे। तो सब कुछ काम तो इवेंचुअली फिनिशर्स को करना पड़ रहा है, बिकॉज एंड इफ केन विलियमसन स्टार्ट्स इन दिस 11, तो फिर सब कुछ काम एंड द मोस्ट ओवर रिलायबिलिटी डेविड मिलर, राहुल टेवटिया, रशीद खान पे आ जाएगी। सो दैट्स माय कंसर्न कि टॉप 4 एंकर्स बन जाएंगे आपके, एंड सब कुछ रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा आई थिंक लोअर मिडिल ऑर्डर पे आ जाएगी। सो दैट्स माय But कंसर्न that इन is द what they बैटिंग। have, man. I mean, उनने खुद ही ये प्लेयर्स सिलेक्ट करे हैं कि कि उनके ऊपर वाले, अभी देयर इज साई सुदर्शन सिटिंग इन द राइम। आई वांटेड टू पुट साई सुदर्शन एट नंबर 3, बट देन मेरे को किसी ने बोला कि यार ये तो बहुत इनएक्सपीरियंस लेवल लगेगी विद शुभमन गिल, साहा एंड साई सुदर्शन। दे हैवंट आंसर्ड द क्वेश्चन दे हैड लास्ट सीजन। तो दैट इज द ओनली रीजन आई पुट केन विलियमसन। देन देयर इज अभिनव मनोहर इन द स्क्वाड एज वेल। वेयर डू आई प्ले हिम? क्योंकि डेविड मिलर विल प्ले, पांड्या विल प्ले, टेवटिया, राशिद खान will play. So that is your middle order. Shami starts your bowling. So the only changes you can do in this team is in the top three. टॉप थ्री भी नहीं, शुभमन गिल के साथ कौन ओपन करेगा, दैट इज वन थिंग। देर इज मैथ्यू वेड सिटिंग इन द रैंक्स, जिसके साथ मैं ओपन करते हुए देखना चाहता हूँ, बट आई डोंट नो वेदर दे विल गो विद दैट वंस अगेन और नॉट, क्योंकि उन्होंने फेल किया था एज एन ओपनर।
बट लेट्स सी क्या करते हैं, बिकॉज शुभमन गिल, मैथ्यू वेड और शुभमन गिल और से साई सुदर्शन है। मैं साई सुदर्शन को ओपनिंग करते हुए देख डालने वाला था यहाँ पे केएस भरत की जगह पे, बट देन उनके पास Yeah, विकेट कीपर नहीं आता। यू हैव टू प्ले अ विकेट कीपर हियर इन दिस 11, दैट इज केएस भरत और साहा और अ मैथ्यू वेड। तो वो खाली ओपन या नंबर 3 पर ही दिख रहे हैं, उसके अलावा तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहे उनकी जगह। yeah, Shivam Mavi in place of Yash Dayal, yeah, possible, but Yash Dayal did really well. There is one Joshua Little sitting in the ranks as well. Now they have gone for him as well. But Yusuf, नहीं, साई किशोर को तो मैं ड्रॉप नहीं कर रहा। साई किशोर is doing really really well. yeah, Uh, yeah, I think this can happen. Mavi in place of Joseph, and then you go with Josh Little or something else as well. So yeah. शिवम महावी इन प्लेस ऑफ यश दयाल, नहीं यार, पता नहीं यार यश दयाल को क्यों बाहर करने में लगे लोग। He did well यार last season, तो I don't know. Urvish Pathak is saying Williamson can have a good season. Yeah, I expect him to have a good season, because when you get dropped from a side like, because for Kane Williamson and for Mayank Agarwal this is very important कि they have something to prove now to their ex franchises कि आपने मेरे को रिलीज किया है तो मैं गलत प्रूफ करना चाहूंगा आपको, एज सिंपल एज दैट। सो आई थिंक दैट इज वन मोटिवेशन दीज टू गाइज हैव। एंड केन विलियमसन के ऊपर तो वो प्राइस टैग वाला भी प्रेशर नहीं है आपको। सो आई थिंक लेट्स नॉट फॉरगेट जीटी ने जो भी प्लेयर्स टारगेट करे उनको सब मिल गए। एंड जब वो ऐसे प्लेयर्स टारगेट करते हैं ना कि जिसपे कुछ पीपल डाउट अ बिट कि यार ये कैसा साइनिंग है, they go on to do really really well. So I think that is what GT has done this season as well. शिवराज सिंह साहा ओपनिंग विद गिल, या आई थिंक विकेट कीपर में आई थिंक साहा, केएस भरत और मैथ्यू वेड कोई भी आ सकते हैं। आदित्य सिंह टॉप 3 में सब बिलो 130 स्ट्राइक रेट वाले और केन विलियमसन 100 की। अरे यार, बट यही यही तो उनको जिताया था पिछले साल, सेम उनके पास तभी मैथ्यू वेड, शुभमन गिल और साई सुदर्शन थे, फिर भी दे वेंट ऑन टू विन द टाइटल बिकॉज द मिडल ऑर्डर वाज देयर। सो अगर मिडल ऑर्डर इनका फायर करे या फिर से, देन दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द top 3 as well, क्योंकि one of the top 3 maybe what they can do is कि they can ask one of the top 3 to go from ball 1. That is one change which they can do. Yeah. Gujarat Titans, two of the India's best keeper in terms of Saha and Bharat. Yeah, I agree. Hmm. Okay, I think still a decent squad. I mean, most of the squads look pretty competitive this season. I'm not going Yeah. to lie with that, but yeah, only question is, can you expect the middle order to perform the same way they did last season? क्योंकि अगर वो नहीं हुआ, then I don't see Gujarat, defending their title. मूविंग ऑन, नेक्स्ट टीम कौन सी लें अभी बताओ फटाफट, चैट में बताओ फटाफट ताकि मैं वो वाली लाइनअप के पीछे जा सकता हूँ। या आदित्य, आई थिंक द लक फैक्टर, दे मैक्स्ड आउट विद द लक फैक्टर इज व्हाट आई फील। इफ मिलर फेल्स देन ही कैन बैट एट नंबर 5 लाइक ऑस्ट्रेलिया। या लखनऊ, ओके, लेट्स गो ऑन टू एलएसजी नाउ। या लखनऊ, दिस इज द 11 विच वी थिंक। अब पूरन पे इतना खर्चा किया है आपने फिर से, तो खिलाओ अभी आप। हाँ रेवन, मैं नेक्स्ट आरआर के ऊपर ही जा रहा हूँ बिकॉज ज्यादा डिस्कशन नहीं है, इसलिए मैं उस पे वो नहीं कर रहा था, बिकॉज इट्स ओनली पॉजिटिव डिस्कशन फॉर आरआर इज व्हाट आई कैन से। रेवन एंड कुणाल दोनों को बोल रहा हूँ। एलएसजी इज व्हाट वी थिंक दिस कुड बी द 11। मार्क वुड, आई डोंट नो कितना फिट है या हो रहेंगे तभी फिट, वो नहीं तो आई थिंक इनके पास बैकअप कौन है अभी, हु इज द फास्ट बॉलर जो इनने बैकअप लिया है? इनने मोहित शर्मा ले लिया है कि नहीं? मोहित शर्मा तो Yeah. जीटी, सॉरी। Daniel Samson, but डैनियल सैमसन इज देयर, he's या more of डैन, an all-rounder. सॉरी। He's more of an all-rounder, not a proper replacement or a substitute for someone like Mark Wood. And even uh, Rutherford, no, Romeo Shepherd. I think that was their another what they added him in the auction. So yeah, two options, but both of them are all rounders. So I don't see them as a replacement of Mark Wood. But yeah, as you mentioned, I mean, last year they had someone like Jason Holder. So I'm not sure, but they will be expecting that the Indian bowlers, I mean, Avesh Khan, Mohsin Khan, they should have a great season. Considering if Mark Wood goes unfit, uh, the one issue is again Nicholas Puran. I'm not really convinced. I mean, GG से हम देखते नहीं है. I mean, गौतम गंभीर क्या फिलोसॉफी होगी कि निकोलस पूरन के पीछे गए. All three top three players are wicket keeper batters. So openers, so still the consistency factor goes around them. But Nicholas Purana, I hope ki fortune changes for him as a player and as a captain of not a captain now. But yeah, as a
batter for LSG. I think they will be hoping that he adds some value to the 11 and makes the impact for the team to get closer to the title. यार तो सबसे पहला सवाल तो मेरे को ये था कि अगर आपको इतने खर्चा करना था और आपके पास थोड़ा पर्स बचा हुआ था एंड में, तो थोड़ा और डाल के आप बेन स्टोक्स के पीछे क्यों नहीं गए? बेन स्टोक्स अगर आप ये लाइनअप में डालो तो Yeah. it change the complexion completely rather than Nicholas Pooran. He can do well, yeah, Nicholas Pooran, but I would take Yeah. that gamble कि आप बेन स्टोक्स को 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देके आप बेन स्टोक्स को 11 में डाल सकते थे. But now you have to fit in a Nicholas Pooran. Now there is also possibility कि दीपक हुडा को नंबर 3 पे खेलना पड़ जाए and Pooran comes at number 4 or 5. So now their keeper already is Quentin de Kock. I don't know why Nicholas Pooran से I can't see keeping. और बट ओवरऑल यस, ये जो सब जो कह रहे हैं ना थोड़े बहुत कि यार ये तो अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 है, ये पिछले साल भी थी यार, एंड दे बेयरली मैनेज टू मेक द प्लेऑफ्स. आई थिंक थर्ड थर्ड पोजीशन पे थे बट एंड तक आ गए थे उधर. तो आई थिंक नाउ मार्कस स्टोनिस हैज टू प्ले अ बिट थोड़ा ऊपर मेरे हिसाब से, कि ही इज नॉट दैट प्लेयर जो आपको नीचे फिनिशिंग करके देगा. उसके आपने खरीदा उसको रिटेन इसलिए करा था कि उसने बीबीएल में ऊपर ओपनिंग में रन बनाए थे, and just play him with the new ball, with the harder ball. I think that is much better. निकोलस पूरन से आप फिनिशिंग कराओ, बट देन आपने 16 करोड़ रुपए से दिए, तो आप उसको फिनिशिंग कराने के लिए दिए क्या पता नहीं. हाँ राहुल, एग्जैक्टली माय पॉइंट. आपने अगर इतने पैसे दिए तो थोड़ा दे के आप स्टोक्स को ही ले लेते. That is a move. I don't know what the thinking is behind the move. It could do wonders for them, but I would take that gamble यार, कि मैं पहले बेन स्टोक्स के ऊपर लगा सकता था इतना पैसा अगर आपको इतना लगाना ही था तो. Uh, Huda will play at number 3. Stoinis Puran, Krunal's form is a suspect. Yeah. Huda plays at number 3. Yeah, it is possible, but it is also कि यार वो out and out number 3 player नहीं है. That you have to make Huda a number 3 rather than ask Huda to bat at number 3. It is two different things. So bowling में Avesh Khan injury prone. Ravi Bishnoi is, I think you can back on him. Mohsin Khan recently has been very injury prone, but uh, I think this is a very important season मेरे हिसाब से for a player like Mohsin Khan. If he does really well this season, I think he is that Arshdeep Singh वाला जो path है ना, वो path के ऊपर Mohsin Khan is going, and he is a consistent. He's a bit quicker than Arshdeep Singh as well. So I think Mohsin Khan के लिए it's a very important season, but he has that injury वाला जो अभी क्या कहते हैं, जो injury से अभी थोड़े ज़्यादा sufferings उनके हुई हैं. Should Rahul at bat at number 4 to help LSG get up a stall? Yeah, that's a good comment to be honest, because there maybe that is the reason उन्होंने पूरन को खरीदा है, कि बोला कि भाई तू थोड़ा ऊपर चले जा, हमारे थोड़े पावर प्ले में रन बढ़ा दियो, क्योंकि हम फिनिशिंग तो कर लेंगे ठीक ठाक. ऐसा लग रहा है कि मे बी दैट इज द थिंकिंग. बट उसके लिए आप बेन स्टोक्स को भी नंबर 3 पे या ओपन करा सकते थे. बट थर्ड वर्स्ट आई थिंक स्ट्राइकिंग और बाउंड्री परसेंटेज लास्ट सीजन फॉर LSG. And I think ये दोबारा हुआ तो I think this year they won't make it to the playoffs. So uh, hopefully they solve most of their issues, because they have enough options, they have enough depth as well when it comes to batting. Mark Wood can bat as well at number 8. So I think that is one good thing for LSG. KL Rahul's captaincy again will be under question. क्या होता है, because the recent form is not that good. ट्विटर पे तो आधे से ज्यादा लोग तो कह रहे हैं कि केएल राहुल को तो अभी अब शायद आई थिंक T20 टीम में भी नहीं रहेंगे, वो श्रीलंका जाने वाली. सो आई थिंक दैट इज वन बैड इशू फॉर हिम. पर आई सेइंग या बिग इशू विद द कैप्टेंसी. He's Big Boss 16 saying LSG also have to go for green other than Pune investment. हाँ मतलब a lot of players are lot of comments are around कि अगर आपके पास इतना पैसा था तो आपने पूरन की जगह कोई स्टोक्स और क्या बोलते हैं ग्रीन या करण तो चलो नहीं मिलता, बट स्टोक्स और ग्रीन तो ऑप्शन थे आपके पास. I feel they should went it after Ben Stokes, but I don't find a point कि I think एक और सोच होगी कि मार्कस स्टोइनिस है तो बेन स्टोक्स क्यों चाहिए, वो एक सोच होगी, but that doesn't mean पता ना आपको कि स्टोक्स नहीं तू मिला अपनी तो टीम में पूरन को पूरन रखेगा के कि पीछे बेन जाओ. स्टोक्स को रखेगा. Yeah, तू अपनी टीम में बेन स्टोक्स को रखेगा, पूरन को रखेगा. yeah, I mean, anyways, Ben Stokes, but we all know Gautam Gambhir thinks a bit अगर different apart from Ben this. Stokes is He's your an impact big game player यार. Is Nicholas Puran your big game player? I don't think so. क्योंकि ये बहुत साल से But I'm ऐसा नहीं sure है कि निकोलस पूरन. गौतम गंभीर का ही I feel कि उनका ही कुछ ना कुछ सोच होगा. So let's hope. I mean, Gigi, something he can bring out of them is what we can expect. I mean, chat में what do you think? Ben Stokes
को खरीदना चाहिए था या ऑलराउंडर को खरीदना चाहिए था, या इट इज द राइट डिसीजन टू पिक अप निकोलस पूरन? खाली नाम ले लो चलेगा, स्टोक्स या पूरन लिख दोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। आदित्य सिंह, निकोलस पूरन जिस भी टीम के लिए जाता है इन दैट पर्टिकुलर सीजन, वो टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंचती है। Yeah, that's I don't know whether how good, how accurate that stat is, but let's see. Stone is at number three. Yeah, I think I would prefer Stone is at number three. Stokes, Ben Ben Stokes, yeah. सबको ही पता है कि अगर पैसे थे आपके पास अभिषेक सिंह पूरन की Stokes, yeah, okay. Impact player, yeah, K Gautam can play as an impact player for sure. Give you that bowling off spins as well, big hits in the end if you're chasing a score. Yeah, I think impact player could be K Gautam. KB Singh, right decision because his form in T10 was fabulous. Yeah, look at the side he played and look at the bowlers he faced in the T10 as well. So that is a different ball game. But yeah, I think we could be proved wrong. It could be like a master stroke by LSG. Nicholas Pooran ko kharidna, but Yeah. yeah, it's not only ki yaar Ben Stokes is not a gun T20 player. It's like what can he win you games single-handedly? Ben Stokes, yes, he can. निकोलस पूरन, yes he can, but the term is कि यार आप कितने मैचेस पे आप रिलाई करोगे बेन स्टोक्स को टू फिनिश रादर देन निकोलस पूरन. सो आई थिंक बेन स्टोक्स फॉर मी was their go-to player at that number three. I don't know why they did not go for it. I will be very honest, and I would rather prefer someone like Kyle Myers at number three. He can give you that bowling option as Yeah, well. there is I Kyle mean, he Mayers. looks more convincing. Ben And Stokes is One always thing favorite that was word. surprising from the auction was ki Rasi Van Dusen, I mean, he went unsold. I mean, that was a quite disappointing. And so that is one thing I think LSG should have went after. I mean, that too can be a good option, but yeah, part and parcel of the auction dynamics. Yes, Thakur would be a good death over specialist. Yeah, they have decent. I think the squad looks pretty good for LSG once again. I think there are not many squads जिसको मैं कहूँगा कि यार ये तो खराब लग रही है. I think Delhi is one squad जिसमें मैं कहूँगा कि there are more problems than the other teams. But otherwise, Yeah. I think most other teams have their strengths and weaknesses. So it's not like कि इसके पास upper hand है या इसके पास upper hand है. That is the only thing. Uh, बेन स्टोक्स इज नॉट गो टू प्ले इन आईपीएल, ऑलवेज अवेलेबिलिटी इशू. यार इस साल तो होगा ऐसा, कहीं तो न्यूज़ पढ़ी थी मैंने. द अवेलेबिलिटी इज देयर. नेक्स्ट टीम बताओ यार कौन सी करे. आई थिंक एलएसजी दे लुक गुड. आई थिंक डैनियल सैम्स इज इन एलएसजी. Yeah. Yeah, I think that's a smart pick. I think smart picks, most other teams have done really smart picks as well. Mumbai for me is Jason Behrendorff. For LSG it is Daniel Sams. For RCB it is Will Jacks. For और कौन सी टीम हमने डिस्कस करी? For Punjab Kings it is Sikandar Raza, I would say. Mhm. Or for Delhi it is Phil Salt. Yeah, so I think every team, most of the teams have picked up a smart pick मेरे हिसाब से तो in terms of overseas. Okay, चलो अभी आरआर पे चले जाते हैं अपन लोग. Yeah. Let's go. Yeah, so this is the RR 11, which we think is possible. Josh Butler, Pretty Yashasvi Jain. similar to the last year's squad. They had only one change. I mean, Jason Holder comes in for someone like Oben McCoy. Otherwise, and Jason Holder brings that balance to the 11 that they were lacking, especially the last season. But Yeah, we know but what to expect from Riyan Parag. I mean, all-rounder, and because they will do इम्पोर्टेंट सीजन है यार that रियान पराग के लिए. अभी कब तक उसको एज अपन लोग यंगस्टर गिनेंगे? अभी तक अनकैप्ड ही है वो, है ना? तो आई yeah, थिंक ये सीजन के बाद इट इज हाई टाइम कि वो थोड़ा कैप्ड प्लेयर के अपने कंटेंशन में नाम दे. क्योंकि खाली बीइंग दैट फ्यूचर टैलेंट वोंट हेल्प, क्योंकि फ्यूचर yeah, बहुत 2-3 साल से हम देख रहे हैं फ्यूचर टैलेंट. रियान पराग ही हैज टू प्ले अ बिग रोल दिस सीजन फॉर आरआर. एंड खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी यार जब सिचुएशन में आएंगे ना कि यार जब मैचेस फिनिश करने की बारी आएगी, he has to make sure कि he finishes at least 1 or 2 games. So क्योंकि yeah, right now I think his domestic form has been really good. So based on yeah, that, I think Riyan Parag will be having a better season, I would say, and a more involved season. Be it bowling, be it batting, दोनों. क्योंकि फील्डिंग तो yeah. हमें पता है रियन पराग की बहुत अच्छी है. So I think uh, दे आर सेटल यार. आई मीन ये जो अपन 11 प्लेयर लिखे इसमें से 10 तो हमने प्रेडिक्शन के पहले बताए थे. Yeah. खाली वो 7 नंबर का जो स्लॉट था उसमें जेसन होल्डर को, दैट इज द परफेक्ट बाय Yeah. फॉर आरआर. आई थिंक मोस्ट ऑफ देम
this looks a good 11. And maybe the Rajasthan, smart buy for someone like Rajasthan Royals, I mean, getting 5-6 at 5-6 for someone like Jason Holder is a great buy, I would say. Overall, Shimran Hetmar as a finisher, Ashwin Chahal in the spin department, then you have got Prasiddha Krishna, even Kuldeep Sen as a backup for Prasiddha Krishna and Train Bolt. So overall looks good. I'm not sure do they have any overseas bowler apart from Train Bolt. So that's only one thing I would like to see that if they have, it will be great. I mean, as a backup option for someone like Train Bolt. Other looks good. Yeah. I think for me, I won't complain this RR11. I think this is what I felt will be the 11 before the auction और उन्होंने वो 11 बना दिया और जो Yeah, पता नहीं for some reason दे जितना भी पैसा था वो हर प्लेयर पे लगा रहे थे। I think 2-4 बार तो बेइज्जती करवा ली कि यार हम तो अब पैसा नहीं बचा हमारे पास आउट we are out because we don't have funds. So yeah, like I was saying RR was ready to go for Harry Brook for 13 crores yeah. सैम करन के लिए भी गए थे 13 तक सैम करन पे भी रुके थे वो कि यार yeah. सैम करन पे 13.25 तक तो हम जा सकते हैं सो And Yeah, the I don't highlight know. of that. खिलाते खिलाते किधर उसको Yeah, I agree. And But even if yeah, you look at the spin department, I mean, the backups are someone like Adam Zampa. I mean, one of the top spinners when it comes to T20 McCoy है ना cricket or बैकअप even उनका spin for ट्रेंट बोल्ट Australia. का बैकअप ओबेड मैकॉय Obed McCoy, yeah. या बट मैं तो वो सोच रहा था कि अगर जब भी एसआरएच 13 पे थी अगर वो टाइम Yeah. पे एसआरएच बोलती थी वी आर आउट और 13.25 पे देयर वाज आरआर विद विद हैरी ब्रूक अगर वहां पे रुक जाती एसआरएच फिर आरआर की टीम क्या लगती आती अच्छे से ज्यादा खराब हो जाती अगर हैरी ब्रूक 11 में आ जाता तो बिकॉज अगर हैरी ब्रूक खेलता है 11 में देन हु इज योर फिफ्थ बॉलर ऐसा है क्योंकि And then दैट with Jason Holder भी नहीं मिलता. I mean, that would have been the least they would have lost. या वो No टाइम पे Jason अगर Holder. बोल देना चाहिए था एसआरएच वालों को नहीं यार ले जाओ हैरी ब्रूक वो खुद की टीम एनालाइज कर रहे थे ना दूसरी की करते तो आदमी पता चलता यार हैरी ब्रूक को तो खेलने की जगह ही नहीं है टीम में वो खाली हेटमायर को हटा के और फिर सेम प्रॉब्लम पिछले साल वाली लेते हो और क्या Yeah. SS90 asking should Parag play at number 4 Padikkal is wasted if not opening I don't know यार अभी अपने कितने साढ़े 7.25 दिए हैं पडिकल को रिटेन करने के लिए तो maybe he will play in the 11 but Jaiswal का domestic form has been too good again Josh Butler will play Sanju Samson will play so इन चार को तो आप हटाना नहीं चाहोगे एज आरआर फैंस तो Yeah. होपफुली दिस वर्क्स फॉर देम दिस सीजन क्योंकि देवदत्त पडिक्कल के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस थे ट्रेड के न्यूज़ थे आई डोंट नो स्पेकुलेशंस ही थे आधे से ज्यादा तो बट या आई But थिंक Abhinav, do you think that they do lack a sixth bowling option unless Riyan Parag balls for you? And he hasn't bowled in the last season, so that is one thing which might be a concern as a bowling unit. Although the five bowlers are good, I mean exceptional, but Jason Holder 4 overs in the bank may be a bit doubtful. या आई थिंक देन दरियान पराग एक दो ओवर तो ऑलमोस्ट हर मैच में डाल ही सकता है ऐसा मैं नहीं डाउटफुल तो नहीं कहूंगा आई थिंक ही कैन गिव यू 4 ओवर्स बट वो ये कि अगर इंजरी कुछ कंसर्न आ गई बीच में कोई प्लेयर को देन इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू कंप्लीट द 20 ओवर्स बस और कुछ नहीं Hmm. बट या जायसवाल कैन बोल लेग स्पिन पार्ट टाइम पराग कैन बोल ऑफ स्पिन पराग तो भाई ऊपर से नीचे से साइड से हर जगह से डाल सकते हैं सो आई थिंक दैट Yeah. इज 3 in 1 वाला जो प्लेयर है वो है बट लेट्स सी और कुछ कमेंट है क्या कुणाल सिंह पराग एंड जायसवाल कैन बोल एंड इम्पैक्ट प्लेयर या Hmm. मनीष किशन देवदत्त पडिक्कल इज नॉट सुटेबल इन नंबर 4 ही इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन यार हाँ है यार बट अब क्या करें अभी आप जायसवाल को बाहर करोगे फॉर देवदत्त पडिक्कल आई डोंट नो Paravis Singh RR is so dependent on Butler. Rijit Hmm. Singh RR is the most settled team मैं use कर रहा हूँ word in my opinion with likes for backup for each coach DC doesn't have the firepower in the yeah not so funny saying impact player rule is gonna make up for the six bowling yeah I think that is a good yeah मेरे दिमाग में नहीं आया था यार ये चीज yeah I think this Yeah. team the impact player with this team is most of the times going to be a bowler ऐसा मेरे को लग रहा है And maybe because Kuldeep Sen for Riyan Parag. And the same goes if RR are bowling first. Riyan Parag in the second innings for Kuldeep Sen. yeah, Something like that. then you can set out like a Yashasvi Jaiswal or a Devdutt Padikkal who will not bowl. I think अगर देवदत्त Yeah. पडिक्कल ने अपने रन नहीं बनाए तो I think defend करते time you keep him out and get a bowler in the 11 as an impact player. So I think yeah I think that is smart from Rajasthan क्योंकि impact player this team will benefit a lot from that impact player वाला rule क्योंकि इनके जो backups भी है ना they are also pretty good. अभी Yeah. overall the team is I think there is Joe Root left, there is Adam Zampa in the 11.
So that is not a bad squad to have. I think overall the squad is pretty good. Kunal Singh Rathod is a good attacking batsman. Versus from Himachal is good. अब्दुल बशीर यार, मैं सच बताऊंगा, मैंने ना तीनों प्लेयर के नाम नहीं सुने। सुने मतलब देखे होंगे, मेरे को नाम ऐसे याद नहीं रहते। जैसे मेरे को वो एसआरएच में कौन सा प्लेयर अभी, विवरांत शर्मा, मतलब विवरांत शर्मा एसआरएच में है। अब्दुल समद, आई थिंक आई रेड इट समवेयर कि यार अब्दुल समद वाज बिहाइंड एसआरएच गोइंग फॉर विवरांत शर्मा बिकॉज ही सजेस्टेड कि जम्मू एंड कश्मीर का प्लेयर है वो। मेरे को नाम अच्छा पता नहीं, नाम यही है विवरांत, ये नाम याद आ रहा था, पता नहीं, ओनली बिकॉज आई सॉ हिज ऑक्शन। विवरांत शर्मा इज वन प्लेयर जो एसआरएच माइट बी गिविंग अ लॉट ऑफ चांसेस दिस सीजन, इज व्हाट आई रेड समवेयर, only because Abdul Samad is struggling, and Abdul Samad is the one who recommended Vivrant Sharma to the SRH management. I don't know how true it is, but he's one guy which SRH can do. But similarly for RR, I think who are the other Indians outside the 11 for RR? अगर टेस्ट अगर देखें अपन, तो RR के टीम में there are not any big names in the apart नहीं from नहीं overseas नहीं options they नहीं, have. In the RR की in the स्क्वाड में Indian there squad. is no Now Akash someone Vasisht है mentioned okay. Butler as a backup, Tom Banton as a backup option. So he's part of Tom Banton is part of Rajasthan Royals. किसका? टॉम बैंटन नहीं, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ राजस्थान रॉयल्स। So yeah, someone mentioned in the comment section. I think it's Joe Root and someone like even कुणाल one. राठौड़, या कुणाल राठौड़ इज देयर, एडम जैम्पा, के एम आसिफ, आई थिंक ये फास्ट बॉलर था, या आकाश वशिष्ठ, अब्दुल कोई तो है, अब्दुल वशिष्ठ, आकाश वशिष्ठ है यार वो। अच्छा ओके। Yeah, Tom Banton is not there in the 11, but yeah, they could be struggling with that impact player वाला thing because अगर उनने खाली इम्पैक्ट प्लेयर के लिए ये जो कुणाल ने जो नाम दिए अगर ये साइन करें, देन आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव। अगर इसमें से इम्पैक्ट प्लेयर चल जाता है, देन you never know in the coming games these guys can get in the 11 as well for the team, so you never know, I think impact play is the worst rule ever। सुपर सब टाइप टीम्स को सिलेक्शन हेडेक ही नहीं होगा, 7 बैट्समैन के अलावा 5 नहीं यार, इट्स नॉट द वर्स्ट रूल मेरे हिसाब से। आई थिंक दिस विल मेक इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि द competition, sorry, not the competition, I would say the level of cricket will be a bit higher then. Batters need to do that extra bit to win games, bowlers need to do that extra bit to win games as well, so I think it's a good rule to have, क्योंकि उनने एक अच्छी चीज वो करी कि उनने ओवरसीज पे वो नहीं करा कि यार आपका इम्पैक्ट प्लेयर भी ओवरसीज हो जाता है, देन इट विल बी लाइक यार आपके पास 6 और 5 वाला रेशियो होता, दैट इज नॉट व्हाट आई थिंक वुड हैव बीन राइट। बट ओवरऑल आई थिंक impact player being an Indian is good for Indian cricket यार। I think you can't complain that कि यार अगर मेरे पास कोई अच्छा इंडियन प्लेयर है तो और मेरे को वो फ्रेंचाइज क्रिकेट का मैच नहीं जिता रहा, then it is not good, but no, I think it's a good rule to have, और ये होगा, I think this will be very crucial in teams winning the matches and losing them, the impact rule, yeah। Most of the impact players will be most probably batters and bowler. I mean, why I don't see all-rounders being impactful players, and if they are all-rounders, I see rather them playing in the 11 or not playing, not being part of the 15 members. So that's one thing. Most probably will be the proper batters or proper bowlers. So that's one thing with the impact players for most Indians. I will see in the upcoming impactful rule that is gonna be applied for the upcoming season. Yeah, Ashwin has suggested names for our team के मासिव एडम जैम्पा मुरुगन अश्विन, ओके। यार मतलब मैंने तो कहीं पढ़ा था यार, मैंने खाली उसके बारे में पढ़ा था, इसलिए मैं बोल रहा था। इट्स अ गुड चेंज, चांस मिलेगा लोगों को, नहीं तो बेंच पे बैठे रहते हैं। हाँ यार, एग्जैक्टली, आई मीन इट्स it's good for Indian cricket itself, man. I mean, if you need to find, you never know impact players, so you can find the next batter or the next bowler for Team India. Yeah, because most of the time the impact player will be a player who has not represented the franchise much. So I think that is pretty much as good as कि यार scout कर रहे हो आप live TV पे कि यार ये player अच्छा है कि खराब है, बस as simple as that. Because you're playing in front of, I think, a whole stadium and the world is watching, the country is watching you. So I think it's like live scouting for the fans to talk about, as simple as that. But yeah, I think over impact player being an Indian is added advantage rather than overseas. Yeah. Yeah. Okay. I think ये एक ही चेंज था जेसन होल्डर का इन द 11, एंड आई थिंक इट फिट्स इन परफेक्टली। नेक्स्ट टीम बताओ कौन सी बची, कौन सी है टीम? आरसीबी हो गई, एसआरएच हो गई, आरआर हो गई, RR पंजाब हो गई, एमआई हो गई, एलएसजी हो गई, केकेआर हो गई।
I हो feel चुकी है, all 10 teams सारी are तो हो गई, done. हमने सारी कवर कर लिया। Yeah, एग्जैक्टली सारी तो टीम कवर कर ली और कोई बची नहीं है। या बट क्या बात करनी है इसमें, और आई थिंक कमेंट्स ले सकते हैं अपन थोड़े और। टॉम बैंटन वाज अनसोल्ड इन द ऑक्शन, या yeah, Pranit Riyan Parag is going to have a killer season this year. Assam might have its first player playing for India. Yeah, hopefully I want Riyan Parag to be around that Indian setup very soon. अभी तो आई थिंक इतने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती है टीम इंडिया की, A B C D E बहुत सारी टीम बनती है जो अलग अलग देशों में जाके टूर करती है, उसमें से एक हाथ में तो रियान पराग का नाम आ ही सकता है। एंड आई थिंक ही इज हैविंग अ गुड सीजन डोमेस्टिकली एज वेल, सो can't complain. I want to see Riyan Parag around that level. Jagadish and Rana, Shreyas, Shakib, Russell, Rinku, Shardul, Nareen, Umesh, Loki, Varun. This TKR team looks quite decent for one season. Lot of firepower. Left hand, right hand batting till 8 with 7 proper bowling options. Yeah, Rajit, I think this is a good 11. yeah. Devane Singh Butler can play at number 4 and Yash. Open with Yash with DDP. Yeah, two left-handers opening the innings, two young left-handers opening the innings. I don't know how Yeah. much the team is looking at that. Because And Josh Butler Butler, at fourth, I don't think so. yeah, No that ways. is that is a worry. I won't say a worry, but that's a gamble. Butler, yes, he has played at four Yeah. before, but लेट्स सी यार, आई डोंट सी बटलर गोइंग डाउन द ऑर्डर, क्योंकि अगर आपको मैच ऊपर ही जिताने पावर प्ले में तो बटलर इज योर गाय। कैन कैमरन ग्रीन ओपन विद रोहित शर्मा? या दैट इज व्हाट वी फील हो सकता है। ईशान किशन ओनली बिकॉज ही हैड बैटेड more in the middle, I mean outside the top two for Mumbai before. That is the only reason we kept Ishan Kishan ahead of Rohit Sharma at number 3, क्योंकि इसमें I think Surya Kumar Yadav is playing for number 4 at India. That is, he can bat anywhere, to be honest. Tilak Verma did well at number 5. Ishan Kishan did well in 2020 batting at number 4. So I think that is the reason we pushed him down the order. And Cameron Green is opening most of the times for Australia in T20 cricket. So And it's yeah, really good to see someone like Shams Mulani here. I feel that he's gonna be an exciting prospect. I mean, we are really looking forward. I mean, so much of contribution for Mumbai. I mean, domestic season में जो इन्होंने मुंबई के लिए किया है, and even we have in the third man creates. I think हमने एक interview भी किया है उनके साथ. So do watch it if, after this stream. So yeah, I mean, so because that's a good video that we had recorded with him. So that he's one player. The only concern is that कि concern नहीं बोल सकते कि will they go with कुमार कार्तिकेय या फिर पीयूष चावला. Anyways, it's their choice. So yeah, that's the only thing कि maybe पीयूष चावला भी हो सकते हैं, but कुमार कार्तिकेय did look decent for them last season. So yeah, I mean two tempting options. They can choose any of them what they want. Prashant is saying all the teams look balanced given they use impact player rule properly. SRH has good Indian talent for that. Yeah, I think this is what you spoke about as well. Probably the best Indian talent who will be playing for any IPL team is SRH. Washington Sundar, Natarajan, Umran Malik, Bhuvi, who else? Mayank Agarwal, Abhishek Sharma, Rahul Tripathi. If those are your 7 Indians in the 11, I think that is a good squad to have. यार मेरे हिसाब से तो। And Yeah. not surprisingly, yes, I agree. SRS has done better than previous seasons in the auction. And I think a lot of credit should go to the analyst as well, because they added one only for this auction and it worked out for them. Uh, any other comment? Right now, there are 4 balanced teams. RR, CSK, RCB, SRH. बाकी का फॉर्म क्या रहता है उस टाइम पे, उसका अलग बात है. Even MI looks good. Okay. This team will also use a bowler as that impact player, but है कौन? That is the question. Piyush Chawla is he your ex क्या बोलते हैं impact player? Possible. Impact player allows you to add an extra bowler based on the pitch conditions. यार अगर आप slow pitch खेल रहे हो, then it gives you that advantage to use a spinner. If it's like a flat track जहाँ पे you need to save runs or get dot balls, then you can add like a pacer somewhere as well. So I think that is the only thing, but it will make the game interesting, is what I feel. Yeah. यार But I feel कि जो MI के स्क्वाड में एक चीज है कि जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट, नॉट रिप्लेसमेंट, आई मीन he's not is irreplaceable, I would say, but a backup Indian pacers, because last season Basil Thampi थे, then you had someone like Jaydev Unadkat. This season I'm not sure कि कितने tempting options है डोमेस्टिक सर्कल में. I'm sure कि MI ने प्लेयर्स लिए होंगे, लेकिन इंडियन पेसर, because there is Jofra Archer, there is Jason Behrendorff, Jai Richardson है, but all
all three are overseas options. Now अगर गलती से खुदा ना वास्ता अगर बुमराह को कुछ इंजरी या फिर रेस्ट हो गया, सो एक अच्छा टेम्पटिंग ऑप्शन होना चाहिए एज अ पेसर. सो दैट्स वन थिंग आई थिंक दे विल हैव टू ग्रूम थ्रू आउट द सीजन. समवन लाइक अर्जुन तेंदुलकर, आई थिंक अभिनव ये बात हमने पहले भी कही थी कि क्या चांस मिलेंगे. सो या आई मीन ही माइट बी दैट काइंड ऑफ प्लेयर कि अगर बुमराह कहाँ पे रेस्ट देना चाहते हो तो या टेम्पटिंग ऑप्शन समवन लाइक अर्जुन या फिर इवन अदर इंडियन पेसर्स टू लुक फॉरवर्ड. Possible, yeah. RR have a good squad and playing 11, but seeing the previous season making decision by the coach and staff's not good decision also same. Nah, yeah. I mean, if they have to get to that next step, Joki is winning the trophy once again. I think they have done well with that Jason Holder wala spot. Because overall, Yeah. this was the most settled lineup along with Gujarat Titans last year, and both the teams went on to make it to the final. So I think सबसे पहले तो Yeah. काम उन्हें ये करनी है कि सिमरन हेटमायर को वो सही फ्लाइट में चढ़ा दे to land यहाँ पे. But I think overall I think RR based on the previous season का जो फॉर्म था अगर वही चलता रहा, then I think these guys can win the title this season. That's a bold statement, but I think they have all the you know Yeah. all the things to win games in a row. क्योंकि इसमें देर आर इनफ मैच विनर्स टू गेम, जो एक एक जिता सकता है. जॉस बटलर एक मैच विनर है. संजू सैमसन कैन विन अ मैच ऑन हिज ओन. हेटमायर कैन डू इट. अश्विन कैन डू इट with his batting or bowling. Trent Bolt can do it. Chahal can do it. Yeah. Prashant is saying SRS always had an analyst. Yeah, I mean they had an analyst before, but इस साल नया analyst लेकर आए थे. So I think someone named Gaurav. Yeah, I think that Gaurav Sundaran. Yeah, Sundaran जो भी था. Atharva is saying Piyush Chawla can give you an extra batting option. He can play in the 11th. Yeah, but even Shams Mulani is a decent player to have. Yeah, I mean 20 lakhs for Shams Mulani is a bargain मेरे हिसाब से, because I've seen him regularly for Mumbai, and he's been a stalwart, I would say, for Mumbai for the last 3-4 years. He has scored 100 for them. I think he's picked up crucial wickets as well. So I think you can't complain that. Hmm. Mm. All right then, Ankit. I think that's pretty Yeah. much it from us tonight. मजा आया काफी. I think there was a decent chat conversation today compared to previous times. I think I would say only because most of the teams are complete now, and by Hmm. complete I mean the predicted 11 is pretty much completed for most of the teams. So I think we can do this again pretty soon. Yeah. To everyone, I think जहाँ से भी आप देख रहे हो, we wish you वेरी मैरी क्रिसमस. क्योंकि यहाँ पे तो अभी तक चल रही है, पता नहीं इंडिया में क्या टाइम है और एशिया में क्या टाइम है. 12:30. ओके, ठीक है. तो 26 दिसंबर मुबारक हो आपको. चलो. तो thank you so much once again in the chat. Some new names, some regular names as well. Very happy to see everyone in the chat. Thank you so much for supporting the channel. Like the video, subscribe to the channel, hit the bell icon. We'll see you guys once again pretty soon. I think we'll talk about the next. What next are we going to talk about? uh, Maybe in that Lanka series. yeah, I mean इंडिया श्रीलंका सीरीज. आई डोंट नो. अब भरोसा नहीं है यार, जिस तरीके से बांग्लादेश खेली है. यू नेवर नो विद इंडिया दीज डेज. सो बिग बॉस, आई एम इन यूके राइट नाउ. मतलब मैं अगले साल तक तो रहूंगा. सो दैट इज द रीजन मैंने ये कहा था. बट या, apart from it, thank you so much once again in the chat. Arijit, Prashant, Yusuf, Anshul, Atharva, Vishal Pawar, Tanish, everyone. Sorry अगर किसी का नाम नहीं लिया तो. But yeah, do join us again for the later streams, and do follow us on all social media platforms. We have crossed 2,000 followers today on Instagram as well. So thank you so much for that. Keep sharing the channel, keep sharing the videos, keep sharing the posts, whichever we post on our social media. And yeah, keep supporting us. See you guys later. Thank you. Bye. Bye.